Action continues in Karachi. This is the second game of the day. It's Abbottabad taking on Sialkot region live from National Bank Stadium, Karachi. It has been a good day of cricket, but before I continue, let's have a look at the points table. Peshawar has been very good, 2 wins out of 2 games. Rawalpindi also securing their second win in the first game. It's Sialkot versus Abbottabad. Sialkot has already won 1 out of 2. 1 out of 1 in fact. Abbottabad hasn't won any game. Top 4 teams will play semi-final. Another game full of action. We're expecting lots of superstars are involved. We can see Yasir Shah, Khalid Usman also in action. Shoaib Malik, we will see him in action. Khurera has scored some runs. Mohammad Abbas also in Sialkot's lineup. Ali has also been in good form. And a very good evening from National Bank Stadium, Karachi. I've been joined by Shah Faisal alongside me. Shah Faisal, what a good game we have witnessed earlier in the day. Rawalpindi had a great win, authoritative win I would say, but Fatah had no one to blame but themselves. Really, you're right, Ali, because they had the platform set. उनके पास platform set हो चुका था. वो capitalize नहीं कर सके जितना score उन्हें करना चाहिए था और फिर fielding में भी costly errors किए उन्होंने जिसकी वजह से उनको ये mistake हुई और वो मैच उतना competitive भी नहीं हो सका. तो यहाँ पे छोटी-छोटी चीजें हैं जो add up होती हैं, लेकिन फाटा के पास एक opportunity थी, वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके. लेकिन क्रेडिट आपको रावलपिंडी को देना होगा क्योंकि जिस तरह रावलपिंडी ने क्लिनिकल परफॉर्म किया और जो रन चेज थी खास तौर पे बहुत कंफर्टेबली उन्होंने उस चीज को हासिल किया. जहाँ 168 रन जब आप देखते हैं तो अब उन्होंने स्कोर पे किया तो अच्छा टोटल था, लेकिन अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे, फील्डिंग में इतने लैप्सेस करेंगे तो कोई भी स्कोर कम हो जाएगा. जी बिल्कुल, फील्ड में तो आपको इस मार्जिन्स इतने स्मॉल हैं यहाँ पर विक्ट्री और डिफीट में कि 1-2 मिस्टेक्स भी गेम का फैसला करने के लिए काफ़ी होती हैं. और यहाँ पहले ओवर में एक चांस मिला यासिर को, उसके बाद भी 1-2 काफ़ी इजी कैचेस थे और वहाँ से मैच का रुख जो है पलटा. आपको अगर क्लिनिकली परफॉर्म करना है सुपर 8 में, आपके पास ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं है. जो टीम कम गलतियां करेगी वही जीतेगी और आज फाटा ने ये सबक सीखा होगा. जी हाँ, जो इनिंग आपने भी नाम लिया यासिर खान का, क्या ही शानदार इनिंग खेली. सेंचुरी स्कोर की, इससे पहले सबजादा फरहान ने की, जिशान मलिक ने की, लेकिन आज जो यासिर की इनिंग थी वो तो कमाल की इनिंग थी. बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत तगड़े शॉट्स देखने को मिले हमें. जी, और अगर आप देखें तो उनका स्टार्ट बहुत कन्वेंशनल था. उन्होंने बैकफुट पंचेस, क्लासिकल ड्राइव उन्होंने 2 हासिल किए. उसके बाद जब उनकी आई इन हुई, क्योंकि थोड़ा सा विकेट पे आपको टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने रेंज ऑफ स्ट्रोक्स अपनी दिखाई. विकेट के चारों जानिब बड़े बड़े छक्के उन्होंने लगाए और फ्रंट फुट, बैक फुट, स्पिन, पेस, रिचली डिजर्व्ड 100 क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने बिल्कुल फाटा को गेम से आउट कर दिया. और इस तरह ही आपको कन्विंसिंग परफॉर्मेंस चाहिए होती है जब आप टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं. यू सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम. चले फैसल, जो हुआ सो हुआ. रावलपिंडी ने मैच जीता है. इस मैच की बात करते हैं. दोनों तगड़ी टीम है. अब्बोत्ताबाद की बहुत अच्छी टीम लग रही है. उनका मुकाबला है सियालकोट के साथ. सियालकोट शोएब मलिक उसको लीड कर रहे हैं. हुरैरा बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं. मोहम्मद अली ने भी विकेट्स हासिल की. तो आप कैसा देख रहे हैं? चैलेंज होगा अब्बोत्ताबाद के लिए? जी बिल्कुल, चैलेंज होगा अब्बोत्ताबाद के लिए और थोड़ी सी वो हैम्पर हुई हैं क्योंकि उनके कैंप में कुछ इलनेस की खबरें हैं. फ़खर जमान आज अवेलेबल नहीं है और ये उनके लिए बड़ा ब्लो है क्योंकि फ़खर जमान काफ़ी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं. अलबत्ता सियालकोट की आप जब भी T20 फॉर्मेट बात होगी, सियालकोट की टीम की बात होगी, ये एक फॉर्मिडेबल टोटल और फॉर्मिडेबल आउटफिट है रादर, क्योंकि जब ये खेलते हैं T20 इकट्ठे होकर खेलते हैं. और शोएब मलिक हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ द थिंग्स फॉर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से हैं और वो पसंद करते हैं सियालकोट से खेलना, सियालकोट को रिप्रेजेंट करना. तो ये उनकी एक खासियत भी है. और फिर जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, जिस तरह वो लोकल लड़कों को इनसाइड नॉलेज उनको होती है और वो जेल करके एज ए टीम खेलते हैं. सियालकोट इज ऑलवेज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद इन दीज कॉम्पिटिशंस. जब आपने सियालकोट का जिक्र किया, बात करते हैं थोड़ा अब्बोत्ताबाद के बारे में. अच्छी कप्तानी देखने को मिली हमें यासिर शाह की जानिब से. 2-3 स्टार्स, बड़े स्टार्स भी मौजूद हैं. आज शायद जैसे भी आपने कहा शायद एक बुरी खबर होगी अब्बोत्ताबाद के लिए, बट स्टिल बड़े अच्छे जेलों के लड़के यंग के भी खेल रहे हैं. बहुत अच्छी तगड़ी साइड और काफ़ी अच्छी यंगस्टर्स हैं इस टीम में. जी बिल्कुल, जो क्वालिटी मैंने सियालकोट की गिनवाई, ये केपी की जो भी टीम्स हैं उसकी यही क्वालिटी हुआ करती है. ये भी लड़के खेलते हैं, जेल होके खेलते हैं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं और एज ए टीम ये फाइट करते हैं. फील्ड में इनकी एफर्ट जानदार होती है. समटाइम्स ये इतने बड़े स्टार्स उनकी टीम में नहीं होते, लेकिन ये जो इनकी क्वालिटी है लड़ने की, फाइट करने की, एक दूसरे के लिए खेलने की, 20 ओवर्स के मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्योंकि अगर एक दफ़ा आपकी टीम ऑन अ रोल हो जाए
तो वहाँ से कोई अच्छी से अच्छी टीम भी आपको पकड़ने में उनको मुश्किल होती है। तो ये क्वालिटी है, फाटा के पास एक्सपीरियंस भी है, खालिद उस्मान है यहाँ पे, यासिर शाह की जो लीडरशिप क्वालिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने देखा है कि वो जिस तरह लड़कों से मैक्सिमम आउटपुट लेना जानते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी भी। एब्सोल्युटली, यासिर शाह का आपने जिक्र किया। चलते हैं सिकंदर बख्त के बाद और देखते हैं दोनों कप्तानों ने आज इस मैच में क्या डिसाइड किया है। Time for another toss, another game in the National T20, and this encounter in the evening, 8 o'clock here at the National Bank Stadium, is between Sialkot and Abbottabad. We've got our two captains, you know them, Shoaib Malik, Yasir Shah, and along with them our match referee, and we're going to have the spin of the coin now. Tails is the call. Shoaib, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। That's a different decision from other captains. यहाँ usually 95% chase पे गए। हाँ, लेकिन आई गेस मैंने ये सोचा कि प्रेशर जो है हम बॉलिंग पे ज़्यादा डालें। आई थिंक दैट आवर बॉलिंग इज़ लाइक इन बेटर फॉर्म एज कम्पेयर टू बैटिंग। सो मेरे ख्याल में उस चीज़ पे प्रेशर डालना चाहिए, अपना कॉम्बिनेशन देख के कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। ड्यू तो नहीं दिखी यहाँ पर, इसको मद्देनजर रखते हुए कितना स्कोर बैटिंग फर्स्ट आपको लगता है सेफ जोन होगा आपके लिए डिफेंड करने में? आई थिंक जैसे हम लोगों ने पहला मैच देखा है उसमें जो चेज हुआ वो बड़ा कंफर्टेबली हुआ, और उसमें मुझे लगता है एनीथिंग अराउंड 170 इट्स गोइंग टू बी अ गुड टोटल। एक क्वेश्चन सारे कैप्टन्स के लिए था, कितना डिफरेंस आता है प्लेइंग 11 में जो आप स्टेडियम का मैच खेल रहे हैं या आउट ऑफ द स्टेडियम खेल रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि जो स्टेडियम की कंडीशंस हैं इट्स अ लॉट बेटर देन रेस्ट ऑफ द जो वेन्यूज़ हैं। जैसे यूबीएल पे हम लोग अभी तक मैच नहीं खेले, लेकिन जो नेशनल बैंक का ग्राउंड है वहाँ पे हम लोग ज़रूर मैच खेले हैं। वहाँ पे थोड़ा सा वो ट्रिकी रहता है वो पिच, वो कहीं ना कहीं बॉलर्स को वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने सो फार अभी तक जितने मैचेस खेले हैं वो लो स्कोरिंग हुए हैं। लेकिन स्टेडियम वाला ये है कि वो तकरीबन 40 ओवर्स का मैच जो है वो जाता है, क्रंच सिचुएशन में 2-3 दफ़ा जाता है वो मैच। तो इसीलिए आई गेस मैंने यही सोचा कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा उस चीज़ पे उस डिपार्टमेंट में डाला जाए जो अच्छी फॉर्म में है। तो आउट ऑफ द स्टेडियम इनटू द स्टेडियम चेंजेस टीम में एक ही चेंज है, हमें ये लगा कि पावर हिटर की ज़रूरत है छठे नंबर पे, तो हम एक अच्छा अबू बकर ऑलराउंडर है उसको हम लोगों ने डाला है। ही इज़ फ्रॉम गुजरावाला और ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ओके, गुड लक टू यू। थैंक यू। यासिर, वही एक सवाल है जो सबको ही पूछते हैं, आप भी पहले बैटिंग करते हैं, यू हैप्पी कि भाई हम चेस करना अच्छा है? नहीं, आई एम हैप्पी क्योंकि हम पहले बॉलिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है सेकंड टाइम डिफेक्टर हो, क्योंकि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, खालिद उस्मान है, साथ में कमान गुलाम मैं भी करता हूँ, तो मैंने पहले बॉलिंग ही करनी थी। ओवरऑल टूर्नामेंट काफ़ी मैचेस हो गए, आपको अपनी टीम के जो चोजन 11 हैं वो मिल गए हैं कॉम्बिनेशन, या अभी आप समझ रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है एक्सपेरिमेंट की? ये कि सारे नए प्लेयर्स जो देख रहे हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि 4 डे और 1 डे में तो मैंने देखे हुए, लेकिन अभी T20 नई क्रिकेट है उनके लिए, और पहली दफ़ा खेले काफ़ी मेरे ख्याल में 6-7 प्लेयर की यहाँ पे डेब्यू हुआ है, तो अच्छे परफॉर्म भी कर रहे। यंगस्टर जो है हमारे अनीस है, आज अनीस खेल रहा है फ़खर जमान की जगह, तो वो ही इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट। कोई चेंजेस लाए हैं टीम में? आकिब नहीं खेल रहा और फयाज खेल रहा है फास्ट बॉलर। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक यू। Okay, so news from here, Sialkot have won the toss and they've decided that they will go out here and bat first. शाह काफ़ी खुश नजर आए इस डिसीजन से जो कि लिया शोएब मलिक ने। पहले बैटिंग करने का टीम पे नज़र डालते हैं, काफ़ी स्टार स्टडीड साइड है ये। मोहम्मद रेरा अच्छी फॉर्म में है, ताहिर बेग के बारे में हम जानते हैं, शोएब मलिक हैं, हमजा नज़र एक और अच्छे प्लेयर हैं, बिलाल आसिफ, उस्मान खालिद, काफ़ी तगड़ी टीम है सियालकोट की। जी बिल्कुल, और अच्छा ये हुआ कि दोनों कप्तानों को उनकी विश मिल गई। दोनों कप्तान जो करना चाहते थे वो मिल गई उन्हें। यासिर पहले बैटिंग करना चाहते थे, शोएब मलिक जो है वो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा रिलाय करना चाह रहे थे, तो ये एक अच्छा मिक्स हो गया और मैच तगड़ा होना। जो लाइनअप्स आप देख रहे हैं उसमें अच्छा बैलेंस है दोनों टीमों में, यूथ और एक्सपीरियंस हमें मिक्स नज़र आ रहा है। जो हमें क्वालिटी इस टूर्नामेंट की है, इस टूर्नामेंट की ख़ास बात है कि यहाँ पे आप किसी भी टीम को आउटराइट इस तरह जज नहीं कर सकते कि यहाँ यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं और यू नेवर नो कि हु इज़ द नेक्स्ट बिग स्टार। तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे दिलचस्प पहलू है, और फिर जब बड़े नामों के साथ ये यंगस्टर खेलते हैं इतनी बड़ी स्टेज पर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और इस टूर्नामेंट की अभी तक ये खासियत रही है, सुपर 8 में हमें कोई क्लोज गेम नहीं देखने को मिले, लेकिन उम्मीद है कि ये मुकाबला कड़ा होगा।
और वैसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया शोएब मलिक ने, क्या अच्छा टोटल होगा आपकी नज़र में? जैसे उन्होंने खुद भी कहा, हमने देखा कि 170 तो काफ़ी साबित नहीं हुआ, तो 180 के आसपास टोटल अच्छा होगा। प्लस जो शोएब मलिक का डिसीजन था वो टैक्टिकल ज़्यादा था, तो जो उन्होंने रिलाई किया है अपनी बॉलिंग पर वो देखना होगा। 175-180 शुड बी गुड टोटल। या 180 का है शाह फैसल ने, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं सियालकोट की टीम। चलते हैं अपने दोनों कमेंटेटर्स की जानब। सिकंदर बख्त, ओवर टू यू। It's time for more action here in the AH Group presents the Jazz Super 4G National T20. And it's one more big guns encounter. Sialkot versus Abbottabad, two former internationals leading the sides with a fair mix of youngsters in there as well. And a different call, different decision while ago from the captain of Sialkot, Shoaib Malik, winning the toss and deciding to bat first, feeling that he wants to put some test on his bowlers to defend the total that they put up. We know that overall in this tournament, especially the games that have been played on the ground, on this pitch or at the National Bank Stadium, sides winning the toss have decided to field first, which means they prefer chasing. But here Shoaib Malik has decided he wants to put the score on board. Herrera and Tahir Beg, the usual suspects, the two openers for Sialkot. Sialkot have won their first match in the Super 8, beating Fata at the National Bank ground, and now here in the stadium they will open in their second game of the Super 8. Abbottabad have lost their first game outside the stadium. They'll look to score their first points in here. Mohammad Herrera, a very talented youngster, and he's shown some real skill and form in the last outing he had over here. And more will be expected from him in this match as well. What could be a good score if they've decided to bat first? Well, again, I would quote the captain, Shoaib Malik. He says, I saw the first game, 170 or close to that was chased easily. So they'll surely look for something more than that. Sialkot versus Abbottabad. Salman Butt alongside me will have more chat about the combinations and the talent on display in this match from both sides. Yasir Shah's last outing here, Abbottabad, they lost the game, and there were few things that you feel that Yasir Shah missed out as a captain. He did not bowl Khalid Usman his complete overs. When spin was working, Kamran Ghulam wasn't tried. We'll see how the things are here today. It's a good batting pitch, pitch number 7. All set and ready. Asif Yaqub is all set. First bowler is Adil Naz, coming from the University Road end. One slip in position, regulation feed, 2 men, third man and square leg outside. Three teams have decided to bat, well, 3 occasions where sides have decided to bat first at the National Bank Stadium. And on these 3 occasions, twice it's been Sialkot. They lost that last match, the rain-shortened game. They batted first, scored a good 170 in 15-over game. Still lost it. Outside edge, open face, and single. Just closing the face, rather. Taking the shoulder of the bat. Yes, center. Off stump. There's a bit of swing in the air and off the pitch, coming in with the angle as well as in the air. So Adil is getting a bit of swing going, but that's normal for the openers to negotiate. There always, or mostly you can say, is a bit of swing around with the new ball, and for a couple of overs maybe. And that is something you should be able to negotiate. Herrera also gets off the mark with that single. No points for guessing. The sides will be looking to score as big as possible in the power play. So it's a crucial time for the bowlers to be accurate, the fielders to be on the mark.
was asking Shoaib Malik at the toss, Shoaib, what's the difference in playing in the stadium and outside the stadium, and how does it affect your 11? How much does it affect? Well, the last game they played outside, which is the first of the Super 8. From here to outside the stadium, they made one change. And they've got an all-rounder added to their 11, Abu Bakr. On your screens, Shoaib Malik, the very experienced campaigner. In fact, the most experienced in Pakistan if you talk about T20 cricket, and one of the smartest people to lead the sides and also to achieving great results with his team. Sialkot Stallions previously, and this year Sialkot, and definitely he has won a lot because of his outsmarted thinking. Dot ball this time. Sikandar, there's a huge difference how you think related to a game, how you think out an opposition. And I think with this Sialkot side, yes, they have good skills, but the leadership thing is entirely different from all the other teams, and that is where they outsmart a lot of teams. And the credit goes to Shoaib Malik for having that kind of a mindset where he can take decisions, calculated ones, and, you know, play according to the situation, make appropriate changes and get results from there. So this tells you that a good mindset is the most valuable thing in any side. Lovely shot off the back foot. And that's the kind of form Herrera has been in. Ball races to the point boundary with the end of the first over, 7 for none. So elegant, so in control. Standing tall off the back foot, pushing it through vacant point. Becomes so difficult to bowl at certain batters when they're in that kind of form. What length to bowl? That wasn't a bad delivery. Venues in the National T20 Cup, the high performance oval just outside the National Bank Stadium, and the average totals have been 150 and plus in the first 3 UBL Sports Complex and the National Bank Stadium. Just the NBP Sports Complex is where the average total has been very low, but 12 games played here at the stadium and the average total is 150. So just that one venue, the National Bank Sports Complex, is where the batters have had a lot of trouble. The rest are pretty much similar. Wow. He's slapped that through cover. Slightly overpitched and he's taken all the opportunity. This time it's Tahir Beg. A square drive, an excellent looking stroke, in control on top of the ball, top of the bounce as well. And then he just knew from the moment he struck it that this one is an absolute boundary. So the difference between and from those who have not been scoring runs, we'll come back to it. Runs down to third for a single. Sikandar, it has been something similar to the World Cup that just happened, that the batters who are playing good cricketing strokes are able to get runs, and lots of them, and consistently. Whereas people who take chances and play strokes that are predetermined or try to go too much out of the box have not been as successful as the ones who have been batting on the merit and who've been playing cricketing strokes. Yes, some rely on brute force. One of them is Fakhr Zaman, who's in the Abbottabad squad. I don't think he's here at the ground. And some have been playing shots which are textbook. If both work in the plan of your team, it's fine. It's just that the bowler feels that he doesn't have a chance when somebody plays a lot of cricketing strokes. And otherwise, the bowler is always thinking that he's in the game and he's in with a chance to get you out. And that is the difference, where you almost crush the hopes of the opposition if you can play
perfectly according to the merit of the ball, and you have good shot selection. Look, an overall, well, like an aerial view of this tournament and the sides, Peshawar seems to be the most well-balanced. And if you talk about sides that can give them a challenge, Sialkot is one of them. And what we saw of Rawalpindi today, they are another one. On their day, Karachi Whites and Lahore Whites. Gone through. You get a feeling that should have been stopped. It wasn't really far away from that cover fielder. Was gone through. In fact, point. Another good cricketing stroke there, and Herrera and Tahir Beg both look in control. This one once again was overpitched, provided the width, and the batter, he did not need a second invitation, and that could have been a better fielding effort, but in the end it goes for 4, and obviously 4 more to the total of Sialkot, who are off to a good start, a reasonable one, 16 for no loss, and we are still in the second over. Doesn't get hold of it, but clears the infield. Coming back, challenging the second one. The throw is wide and they complete it easily. So 2 overs gone, it's 18 for none. Just checking on a short run, but that seems all right. It's amazing how many things the umpires on the field have to notice. When the shot is hit, they notice if the run is completed by the batters. They're noticing if the ball is coming at a flat throw, is there a run out? The head umpire, when the bowler is coming in, he's noticing the no ball, the sideline, then a head in a fraction of a second a wide, or a legit delivery and a leg before, everything. Keep account of the short balls in the over. Also to look at how the field is positioned. Do they have the regulation number of fielders inside the circle? You've got to be having a set of 16 eyes to be like a robot almost. Once again, a tight single, and well, Sikandar, on the contrary, it's just the way of looking at things. If a batter was to be spoken about, to get close to the ball, to wait for the ball, to play late to a delivery, to play under your eyes, or to, you know, just let it come first. You only tell a batter to hit the ball back in the ground, and everything is covered in that. If you just tell him 1 point, all the 5-6 aspects are covered. So likewise, the umpires only have to look at the batter now, when this ball happens, before that the crease, and then where the ball goes. Simple as that. And that is how things get easier. Otherwise, the way you think about, then obviously 16 eyes have to be there. Yeah, I totally agree. From the delivery stride to the shot, yes. I'm talking about if he looks around and sees square leg umpire is his deputy at the moment. He'll look at the number of fielders. Are there regulation inside the field? Is everyone coming inside the circle at the delivery time? That's slashed away. Too full. And we'll take that advantage because the power play is on. That's almost a freebie. Just need to clear that 30-yard circle. And it's on its way. Yes, this one is hit over cover from a position, a strong position, a good base. And the bowler once again pitching it a bit fuller. And that's all Herrera needed. He's in good form. And that's a good cricketing stroke.
Once it clears the field, there is no stopping. Herrera has been good through the tournament. He's given them good starts on most of the occasions. 71 not out versus Fata. 47 not out again against Fata, and he's done that twice. So he's taken a liking to Fata's bowling attack. So 2 failures and 2 successes. Let's see what he gets today. Oh, that one just didn't bounce enough. And cut him, actually. Probably off the surface, just jagging in a little bit. Yes, this time it was one of those balls which required the front foot to go forward. But Herrera, with his both feet staying back in the crease, was not in a good position in the end. He was lucky the ball was not within the stumps. And maybe at times you have just thought of something, maybe running it down to the third and just waited where he was. So no premeditation is ideal for the batters. And there you see, once again, the feet did not go anywhere. And this dismissal, getting bowled Herrera, he in this season is the batter who has got most number of times he's got bowled in this season. We'll come back with the number, but that is what his coach said, that he's getting bowled most number of times in the season. He's played all around it. I think first we'll look at the crease. There you go. That's a legit delivery. He moves slightly away and then plays around it. There you go. We'll have a look at that again, but Herrera has to go back. 15 for him, 23 for 1. Salman Khan, the new batter. .23 for 1. Now is the start of the 4th over. Dot ball, the follow-up delivery to the wicket that fell in the last over. And Herrera once again, if you see as an opener, you can see 3 stumps while he's getting himself engaged and preparing for the stroke. And just see the front foot toe. It comes down towards the leg stump line and it doesn't go towards the ball. And that is the reason what creates those big room where you can see the 3 stumps. And once you miss the line, you have no second line of defense. And that is where he has been failing throughout this season. And this is something he needs to overcome. Yeah, it's quite an observation, and because he's planting his foot towards the leg stump, he's exposing his stumps, and he's been hit on the middle, not top of off. And Sikandar, not to take any credit of this observation, this is something which his coach, Tanveer Shaukat, the head coach of Faisalabad, where he was playing from in the Qaid-e-Azam Trophy and the One Day Cup, he is the person that actually observed that. If you have a look at his front foot and the toe, it comes down straight towards the leg stump line. In fact, it should be towards the covers, and that is what will allow him to move towards the ball. This movement does not allow him to move towards the ball. And I think the perfect observation comes from Tanveer Shaukat.
Oh, he's completely missed it. He's just gone with a swing. Because of that wicket, now the runs have dried up in the over. Have a look at that. He's just gone swinging through the line, but no contact. Just feels slightly late on that as well. The crucial delivery is going in dots inside the power play. Just one run in the over with one ball to go. In that range-shortened game here at the ground, he came at number 3. It was a 15-over game, 5 overs power play. I mean, the regulation full 20 over, it comes at 4. Nice looking shot to the fielder. Another dot. What a good over this is, Fayaz Khan. Just one run of it. 24 for 1. लाइन में चूक गए और वाइड भी मिली, लेकिन इसके साथ एक शिकंजा कसा है अब तक पिछले 2 ओवर्स के दौरान। जहां पर हुरैरा मौजूद थे वहां पर दिल खोल के स्ट्रोक खेलने का मौका भी मिल रहा था और आपको देख के मजा भी आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद से उनकी विकेट ने ये डिफरेंस क्रिएट किया है। एंगल क्रिएट करके उसी अंदाज से डिस्टर्ब करना चाहते थे बैटर को और अपने एंकर्स ड्रॉप कर दिए हैं ऐसी बॉलिंग के खिलाफ। और ये एक बड़ा फैसला था यासिर शाह का कंटिन्यू करने का। इसके साथ 3 ओवर मुकम्मल हो जाएंगे आदिल के। अच्छा कमबैक किया। सबसे खास बात यह रही कि अच्छी पेस के साथ विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की है। दोनों ही बॉलर ने ज़्यादा रन्स नहीं दिए, सिर्फ 25 रन्स, 5वां ओवर है ये। हमें लगा था कि शायद थोड़ा इनएक्सपीरियंस है इस फास्ट बॉलिंग यूनिट में, लेकिन उन्होंने अभी तक बहुत शानदार बॉलिंग की है। खालिद उस्मान जल्दी एक्शन में नजर आएंगे हमें, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और यही करते रहना होगा, कंसिस्टेंटली विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करते रहना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ताहिर बेग भी एक 6 हिटर हैं ये, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली लाइन लेंथ का अच्छा ख्याल रखना होगा। विट मिली थी लेकिन उसके ऊपर जाकर कट करने में कामयाब ना हो सके और दूसरी जानिब टेल्स अप हैं। ये एबटाबाद जैसी टीम जो कि अपने पॉइंट को प्रूव करना चाहती हूँ, जिसमें कामरान गुलाम और यासिर शाह जैसे तजर्बेकार कोना मुश खिलाड़ी भी हैं और उसके साथ साथ ये यूथफुल और ख़ास तौर पर जो इनके फास्ट बॉलर्स की जोड़ी है, इसने दोनों एंड से ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अभी पावर प्ले मुकम्मल होने में 10 गेंदें बाकी हैं, लेकिन ऑलरेडी 14 गेंदें डॉट बॉल की सूरत में। मरहूने मिन्नतें शानदार कमबैक के। हुरैरा जब तक थे वो बड़ी जल्दी पिक कर रहे थे पेस को, लेकिन उसके बाद से जमूद तारी है। यही क्वालिटी रही है, डिसिप्लिन सबसे अच्छी बात रही है इस फास्ट बॉलिंग पेयर की, और इसी वजह से ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए हम। हुरैरा ने कुछ अलग करने की कोशिश की थी, थोड़ा अपने लेफ्ट लेग को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो डिसिप्लिन था विद इन द स्टंप्स बॉल करने का, उसकी वजह से अपने विकेट गवा दी। और ये बड़ी विकेट हासिल की है, क्योंकि हमने देखा कि हुरैरा ने कैसी बैटिंग की है इस पूरे नेशनल T20 में। बहुत एग्रेसिव बैटर हैं और एक अच्छा आगाज़ ही चाहिए था एबटाबाद को, जो कि उन्होंने हासिल कर लिया है। टॉस पे काफ़ी खुश थे, टॉस हार के यासिर शाह, क्योंकि वो भी बॉलिंग ही करना चाहते थे पहले।
सीनियर खिलाड़ियों से बात करने के बाद खालिद उस्मान और यासिर शाह स्टंप्स की लाइन में लगता है कि बरकरार रहने का फैसला किया, और ये शानदार बॉलिंग है। जहां पर उन्होंने बैट्समैन को विकेट नहीं दी, वहां पर बैट्समैन भी फ्रस्ट्रेटेड हैं शॉट के लिए जाने को। ये वक्त हाथ से तेजी से निकलता जा रहा है। आज की पिच जो पिछले 2 दिन के दौरान खासतौर पर सुपर 8 के मरहले के साथ अली एक चीज़ हुई है वो ये कि पिच ने बड़ा ज़बरदस्त बाउंस वाला काम किया, जो कि इब्तदाई मैचेस में आपको ऐसा लग रहा था कि ख़ासतौर पर शाम के औकात में पिच थकना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब अंडर लाइट्स आपको ज़बरदस्त बाउंस मिलता है जिसके ऊपर बैट्समैन ट्रस्ट करके शॉट के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक काउंटर प्रोडक्टिव है। उठाकर खेला और मार्जिनली फील्डर के सर के ऊपर से निकालने के लिए गए, लेकिन खालिद उस्मान को फिर पहुंचने का मौका मिल गया। बल्ले के दरमियान से ना खेल सके थे, ना टाइम कर पाए, लेकिन आगे बढ़ के खेले थे। हवा में गेंद गई लेकिन दायरे को कम से कम क्लियर किया। नाखुश नहीं होंगे यासिर शाह और आदिल, क्योंकि ये ज़बरदस्ती शॉट खेला गया था। अच्छी बात यह रही कि ख़राब बॉलिंग नहीं हो रही है, डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही है। आप कीजिए जो करना है, जो रिस्क लेना है वो बैटर ले। ये भी रिस्की शॉट था, विद इन द स्टंप से ज़बरदस्ती फोर्स करने की कोशिश। लकी रहे कि बहुत करीब था ये खालिद उस्मान के। एक और विकेट तो हम समझेंगे कि डेफिनेटली एबटाबाद ऑन टॉप हो जाएगा। मेक श्योर करें कि सारे फील्डर्स इन प्लेस हैं, जो मिड ऑफ मिड ऑन है वो सर्कल से आ रहे हैं। खूबसूरत डिलीवरी, तीसरा ओवर भी किया और उसका हक अदा किया आदिल ने। 28 पे 1। एक बार फिर कंसिस्टेंसी अच्छी, लेंथ थोड़ा लो रहा है बॉल। एक टप्पा लगने के बाद जरूर गया है, लेकिन दाद देनी होगी इन बॉलर्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं यंग फास्ट बॉलर्स से। बड़ी स्टेज है, बड़ा प्रेशर है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है अकीलन के लिए कि बड़ी स्टेज पे आके आप परफॉर्म करें, अच्छा करें टीम के लिए, और अभी तक शानदार रहा है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का है मैदान, जिसकी नई छत भी अब पुरानी होती जा रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में जैसे जैसे क्लोज मुकाबले होंगे तो तमाशाई रुख करेंगे। सुपर सैटरडे है जहां पर सियालकोट की पावर हाउस टीम मुकाबला कर रही है एबटाबाद की खूबसूरत वैली से ताल्लुक़ रखने वाले इन क्रिकेटर्स का, जिन्होंने अपनी हार्ट आउट परफॉर्मेंस दी है। जहां पर आपको मुख्तलिफ रीजन से खिलाड़ी आते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर पेशावर की एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि एक मौके पर जब खैबर पख्तूनख्वा कि आप 11 खिलाड़ी निकालते थे तो किसी भी इंटरनेशनल T20 टीम को जाके चैलेंज कर सकते थे, और उसके बाद आपको फिर फाटा और अब ये एबटाबाद की टीम से ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, जिसकी कप्तानी मिली है यासिर शाह को। इसी सीरीज़ में शुरुआत की है शहाब ने, 3 मैचेस अब तक खेल चुके हैं, लेकिन अब इन शूज़ को फिल करना पड़ेगा। पहले 2 ओवर में तेज़ बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन उसके बाद से 3 ओवर में 10 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। सन्नाटा तारी है सियालकोट पे, जिसको ताहिर बेग तोड़ने की कोशिश करेंगे। आखिरी ओवर है पावर प्ले का। दो कदम आगे आकर कुव्वत इसके साथ इस गेंद को खेल दिया और जम्मू तोड़ने में कामयाब रहे ताहिर। ये खराब लाइन है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और यही ढूंढ रहे हैं बैटर्स। इससे पहले वाले दोनों बॉलर्स ने बहुत टाइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, ये लेकिन ये लूजनर था। पहला बॉल किया है शाह ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये इजी पिकिंग्स है, ऑल्दो टो एंड पे लगा है, बट स्टिल फील्डर से अवे था, आसानी से ये 4 रन मिलेंगे। तो शाह को ये करना होगा कि जो डिसिप्लिन पहले बॉलर्स ने दिखाया उन्हीं पे चलना होगा, उसी लाइन पे चलना होगा। फिर खराब लाइन थी लेकिन बच निकले हैं, फील्डर डीप में मौजूद हैं। पावर प्ले में अब तक 3 50 प्लस स्कोर बनाया और उनका लोएस्ट 40 का है, जो कि उसके करीब करीब पहुंचना चाहेंगे, लेकिन सियालकोट की टीम का पोटेंशियल क्लियरली इससे ज़ायद है। तो हुरैरा की सूरत में बड़ी विकेट हासिल कर चुके हैं, जो कि इस सीज़न में अपने आप को उन्होंने रिडीम किया है इस T20 टूर्नामेंट में। इससे पहले जो उनकी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस थी, उनके अपने शाह नहीं थी, शायद उन्होंने अपना गोल बनाया हो कि वो जल्द एलिवेशन हासिल कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन यहाँ पर अब तक बड़ा अच्छा खेले हैं। फिर हमजा नजर हैं, बिलाल आसिफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पार्टनरशिप की ज़रूरत है सियालकोट। अच्छा रहने के अखिल, अच्छे नाम लिया आपने, सारे बड़े प्लेयर्स का नाम लिया है, लेकिन मेरी जो नजरें हैं वो हैं अबू बकर की जानिब,
क्योंकि उनका जिक्र शोएब मलिक ने टॉस पे किया है कि वो एक ऑलराउंडर है जिन पे नजरें रखनी होंगी, तो देखना होगा कि वो क्या स्पेशल करते हैं। क्योंकि अगर कप्तान ने आपका जिक्र किया है टॉस के ऊपर, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ तो अलग है। गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, शोएब मलिक काफ़ी उनके बारे में हाई बोलते हैं कि बहुत अच्छे तगड़े ऑलराउंडर हैं। तो देखना होगा कि वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे या नहीं। दो कदम आगे आकर स्मैश किया और बहुत करीब थे कैच करने के, लेकिन रिस्क का रिवॉर्ड कमा लिया दूसरी जानिब ताहिर ने ओवर के दूसरे चौके के साथ। या कप्तान यासिर शाह बहुत करीब थे इस कैच के, ज्यादा लंबे कद के नहीं है, शायद कोई लंबा कद का फील्डर होता तो डेफिनेटली ये कैच वो पकड़ लेता, लेकिन खराब बॉलिंग है, थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, बड़ा शॉट खेलने गए हैं। देखिए ये बहुत ही करीब था, ये थोड़ा टाइमली जंप या थोड़ा लंबे कद वाला फील्डर होता तो डेफिनेटली ये कैच हो जाता और बड़ी विकेट हासिल कर सकते थे। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये यही बताती है कि करीब थे विकेट हासिल करने के। और खराब लाइन, फ्रस्ट्रेटेड उठाकर खेलने में गए ताहिर और यूं अपना पहला छक्का भी निकाल लिया है फ्लैट, लेकिन छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया। कहां ये फ्लाई करे तो कहां आके दोबारा से दीवार के साथ लगी एबटाबाद। यहाँ जो आदिल नाज और फयाज का हार्ड वर्क था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं जब शहाब ने जाया कर दिया इस ओवर में। 16 रन दे दिए पहले 5 बॉलों पे, क्योंकि खराब लाइन और खराब लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं और इस पेस से आपको यहाँ पे बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टांग पे बॉल करना, और जब फाइन लेग के फील्डर सर्कल के अंदर होगा तो ये बहुत आसानी से ये शॉट खेलेंगे, निडर होकर ये शॉट खेलेंगे। और ताहिर बेग को हम जानते हैं कि ये कितने तगड़ा खेलते हैं, कितने बड़ी हिट मारते हैं। लाहौर कलंदर ने इनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, काफी उम्मीदें हैं इनसे पाकिस्तान क्रिकेट को। पावर प्ले का खात्मा हुआ और सियालकोट का भी कमबैक 44 पे 1। ताहिर भाई को क्रेडिट जाएगा कि जहां पर हम इन खिलाड़ियों में से कई को पहली मर्तबा इस लेवल पे परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, वहां पे आप इन खिलाड़ियों को भी पहली मर्तबा एक दूसरे के खिलाफ उतरते हुए देख रहे होंगे। और जितनी क्विकली आते ही उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, वो पूरा एक अच्छे बैट्समैन होने का सबूत आपको देती है, क्योंकि क्लियरली पहली मर्तबा खेल रहे होंगे वो शहाब को, अगर इसके अलावा कहीं और उनको क्लब क्रिकेट वाला में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आते ही उन्होंने जहां विकेट मिली उसका फ़ायदा उठाया और रिकवरी दी है। गो के ये 3 मर्तबा 50 का टोटल क्रॉस कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। पावर प्ले के अंदर ही उसके करीब तो ना पहुंच पाए, लेकिन एक अच्छा टोटल जो कि कम बैक करके 7.3 की रन रेट के साथ हासिल किया। तजर्बाकार खालिद उस्मान आ गए। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया पहले बॉल पे। ये अब काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, ये डिफरेंट चैलेंज होगा इन दोनों बैटर्स के लिए, क्योंकि खालिद उस्मान के पास बड़ा तजुर्बा है और ये बहुत स्मार्ट बॉलर हैं, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। अच्छा शॉट है ये एक्स्ट्रा कवर की जानिब, अच्छी फील्डिंग। स्लिप हो गए हैं और शायद इंजर्ड भी हो गए हैं, शायद अच्छे सीन नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। हैमस्ट्रिंग शायद खिंच गया है, जिसकी वजह से काफी तकलीफ में लग रहे हैं हमें ताहिर बेग। ये अच्छा साइन नहीं है सियालकोट के लिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग अगर आप खिंचती है तो ये बहुत तकलीफ दी होती है और शायद कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कैसे, क्योंकि जोरदार शॉट था ये, पहला रन बहुत तेजी से लिया और ये जब यहाँ पे स्लिप हुआ तो शायद थोड़ा पाँव मुड़ा भी है और नी पे भी थोड़ा प्रेशर आया, काफी तकलीफ में लग रहे हैं ताहिर बेग। उम्मीद है कि जल्द खड़े होंगे, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने अपने हाथ में जो कंट्रोल कर ली थी चीज़ें वो माने रखेगा सियालकोट के लिए इस पार्टनरशिप को चलाने। तो बज़ाहिर तो क्रैम्प का ही मसला लग रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हुरैरा ने धुआंधार शुरुआत दी थी एक मरतबा फिर नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। उन्होंने गेंद को जल्द पिक किया और अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए, जो कि खासा है हाई बैकलिफ्ट के साथ अपने एंगल खुद बनाने का, लेकिन उसी कोशिश में वो खुद आउट हुए। और उसके बाद जाते जाते आखिरी ओवर ताहिर बेग को जहाँ तोहफे मिले पूरा उन्होंने ग्रैब किया और यूँ सियालकोट को दोबारा से गेम में ला खड़ा किया। सियालकोट की टीम है, अब शोएब मलिक कांस्टेंट हैं इस सियालकोट के साथ, और वो जो गुड ओल्ड सियालकोट स्टैलियन के अली दिन होते थे, जिसमें जो फुटबॉल में ब्राज़ील का काम था, जो 2000 के अवाइल में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए होता था, वही सियालकोट था ख़ासतौर पर नेशनल T20 टूर्नामेंट में। और ये एक
हमने कई मरतबा इनके हवाले से सुना है और बात की है कि शोएब मलिक की जो मिसाल है अपनी फिटनेस, गेम के साथ कमिटमेंट, उन सब के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कप्तानी में, क्योंकि इनमें से कोई भी खिलाड़ी अब वो नहीं रहा जो कि उस सियालकोट स्टैलियन का हिस्सा हो, जिसमें जो कि फेमसली हम बात भी कर रहे थे कि इमरान नज़ीर और उमैद आसिफ वगैरह ये सब हुआ करते थे, लेकिन वो एक कांस्टेंट चले आ रहे हैं। 4 बॉलर उजमाए अब तक एबटाबाद। एक विकेट हासिल किया आदिल ने, फयाज ने 2 ओवर में 12 रन दिए। शाब का एक ओवर थोड़ा महंगा रहा है जिसमें 16 रन दिए। खालिद उस्मान ने सिर्फ 2 ही बॉलिंग की हैं, उसमें 2 रन दिए हैं। 40 रन बना लिए हैं सियालकोट ने। अभी थोड़ा वक्फा है तो बात कर लेते हैं उसी सियालकोट स्टैलियंस की टीम की। उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो मेरे नज़दीक है वो इमरान नज़ीर को जाता है। जिस तरह की बैटिंग वो किया करते थे उस ज़माने में, अपने टाइम से आगे बैटिंग किया करते थे, तगड़ा खेलते थे, स्ट्रॉन्ग रिस्ट और क्लैरिटी थी उनके भी थॉट्स में, क्योंकि वो एक ही तरह बैटिंग करना जानते थे। और वो जो डोमिनेशन थी सियालकोट की, उसमें बहुत अहम रोल था इमरान नज़ीर का। आज भी उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। जब भी हम उनको देखते हैं, उनको मिलते हैं, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैंस उनको फॉलो करते हैं। और वो प्लेयर ही ऐसे थे, लाजवाब प्लेयर थे। और डेफिनेटली अगर आज के ज़माने में अकील वो होते तो शायद फ्रेंचाइज क्रिकेट के सबसे महंगे क्रिकेटर होते इमरान नज़ीर। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि ताहिर बेग उठ खड़े हुए हैं। उनको उठ खड़े रहना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि जितनी देर ये रहेंगे क्रीज पे, रन आते रहेंगे तेजी से। गेंद रुक कर आई और इसको सीधा खेल बैठे थे खतरनाक अंदाज से। यार वो भी उठ खड़े हुए हैं, सियालकोट भी दोबारा से धड़क रहा है। और ये अच्छी बात है इस नए फॉर्मेट की जानिब दोबारा मुड़ने की कि आपको तमाम टीम्स मिलेंगी। और उसके तहत कई मरतबा जो खास तौर पर पिछला स्टेज था उसमें आपको वो टैलेंट लगा कि जो अभी शायद उस स्टेज पे पहुंचने के लिए वक्त लेगा, लेकिन अब सुपर 8 का स्टेज है और यहाँ पर आपको जो बॉलिंग और डिस्प्ले बैटिंग का लग रहा है। रिवर्स खेलने के लिए गए, बड़ा सफर तय करना है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 50 अब सियालकोट की, और सलमान को भी हाथ खोलने का मौका मिला। पहला चौका सलमान का। खुश नहीं है खालिद उस्मान, क्या ये फील्डर के एफर्ट से खुश नहीं है? शायद उन्होंने नाखुश अपनी बॉलिंग से होना चाहिए, अपनी लाइन से होना चाहिए, क्योंकि आगे पिच किया हुआ बॉल, ये इनोवेशन थी, बहुत अच्छी शॉट थी है सलमान की जानिब से, इसलिए इसमें कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। ये प्रॉपर अच्छा शॉट खेला गया है। और अकील अभी इमरान नज़ीर का जिक्र चला तो फरहान निसार हमारे जो दाएं जाने बैठे हैं, बेहतरीन स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी जो रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 50 का वो इमरान नज़ीर के पास है। पाकिस्तान में नेशनल T20 में 14 बॉलों पे 50 रन इन्होंने तब किए थे जब कोई सोचता भी नहीं था इस तरह क्रिकेट खेलने का। तो बिल्कुल हम मिस करते हैं इमरान नज़ीर की बैटिंग। 7 ओवर्स के बाद 51 पर 1। एक चीज़ की सिर्फ तशनगी अभी भी रह जाएगी और हम श्योर कि जब ये सिस्टम आया है तो वो इन चीज़ों को डेवलप करेगा, और वो है कि ये होम एंड अवे की बेसिस पे इस अंदाज के मैचेस खेले जाएं, जो कि ज़ाहिर बात है कि वक्त, बजट, रिसोर्सेज, खिलाड़ी ये सब ज़्यादा मांगेगा। लेकिन ये जो आप लोग जाकर एबटाबाद का स्टेडियम देखा है वो हमने तो तस्वीरों में देखा है, लेकिन वो इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर अगर आप एक तरह से फैसिलिटीज़ को डेवलप करें, तमाशाई आपको आते हुए अपने सामने देख सकें, तो फिर आपको यासिर शाह जैसे कई क्रिकेटर्स मिल सकेंगे वहाँ से भी। 143 मैचेस खेल रखे हैं जिन्होंने दुनिया जहां में अपना सिक्का बनवाया है। अब कप्तानी कर रहे हैं एबटाबाद की। रूम बनाकर खेलने के लिए गए, बड़ा मुश्किल आन पड़ी थी। तो ये दूसरी जानिब सियालकोट में भी आई एम श्योर के इस अंदाज की वो तमाम फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन वो इस लेवल पे अगर आपको दिखा सकेंगे जिसमें एक ब्रॉडकास्ट की भी फैसिलिटी और उसके साथ साथ क्राउड आके मैचेस को एंजॉय करे, तो वो आपको एक फ़र्क ही, एक इन्वॉल्वमेंट ही और लेवल की दे देता है। और नहीं भूलना चाहिए आपकी कमेंट्री और आपके अल्फाज। मुझे तो आप क्रिकेट के जवान एलिया लगते हैं। जितनी अच्छी कमेंट्री आप, जितने अच्छे अल्फाज का चुनाव आप करते हैं क्रिकेट कमेंट्री में, कि बहुत शानदार। कोई शेर हो जाए। जॉन एलिया बड़े उदास से रहते थे, अब मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर रूम बनाकर खेलने के लिए गए एक मरतबा फिर, सिर्फ से फील्डर की जानिब कि वो उदासी की वजह से आपने कहा है, या फिर तेज तरारी की वजह से, या फिर कुछ ऐसी करख्तगी है जो आपको महसूस हुई? आपका अल्फाज का चुनाव बहुत शानदार है अकील, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कमेंट्री शेयर करके, और आपको एबटाबाद जाने का भी मौका दिया जाएगा। ये फरहान ने दे दिया है शेर, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये कुछ टीम्स के हवाले से कह सकते हैं, मैं भी स्टेज से दूर।
एक ही रन बनेगा। यासिर शाह आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट स्पेल है खालिद उस्मान और यासिर शाह का, क्योंकि इसमें विकेट्स भी हासिल करने हैं, रन्स भी रोकने हैं और उनका मुकाबला दो तगड़े बैटर्स के सामने है। ऑफ द बैक फुट एक मरतबा फिर फील्ड वाइड स्प्रेड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकाबला है। स्पिनर्स एक्शन में आ गए हैं दोनों जानिब से और अब बड़ी जांफशानी के साथ इनको रन स्कोर करने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ शायद अब इनको वो सॉफ्ट हैंड से खेल के जहां पर आपको बाउंड्री निर्धारित है वहां पर फील्ड वाइड स्प्रेड है, को 2 में बदलने का मौका मिले। लेकिन इस मरतबा बिग बूमिंग स्वीप खेलने के लिए गए, 1 2 3 4 5, लेकिन इवेंचुअली ड्रॉप कर दिया। एतजाज हबीब जो कि जगल करते रहे गेंद के साथ, यासिर शाह सकते के आलम में उनको देख रहे हैं। विकेट हासिल हो चली थी लेकिन नहीं मिली। इसी अपॉर्चुनिटी का वेट था यासिर को और क्रिएट की है वो, यही था कि ये मुश्किल बॉलिंग होगी यासिर के जाने से, सीधा गया था कैच। एक मौका हुआ, 2 3 4, चौथे अटेम्प्ट के बाद ये कैच उनके हाथ से निकलेगा, ये महंगा पड़ सकता है। खुश नहीं है यासिर शाह और राइटली सो। 8 ओवर्स के बाद 55 पर 1 सियालकोट। $56 for 1. Tahir is back up on his feet. Salman batting on 11. This is a crucial phase of the game. We've seen so many times in T20 cricket. This over number 7 to 15, the innings take a shape where they're make or break. Very crucial phase. It seems all easy when there are 2 set batters in there. But more often than not, trying to push the pace in that phase. A wicket goes and then you see but a few wickets tumble. Khalid Usman is a very clever operator, very, very experienced. His spell will be crucial in this middle phase of the innings. Sialkot would feel that they got a platform set. After dismissal of Herrera, things have just gone slow for Sialkot and runs have dried up. And that's good to see some very accurate, good bowling, enforcing such shots, reverse or switch hits. And it's not even getting them runs. 9 gone, 58 for 1. Sialkot dugout looking pretty content at the moment, scoring at just more than a run a ball. Shoaib Malik talked about that 170 at the toss. They got the firepower. Wicketkeeper Sajjad is very, very vocal behind the stumps, making sure that all the fielders from the edge of the circle inside the ring, they should start from the edge of the circle, which means they're happy to give away the one. And didn't quite get hold of it. It lands nowhere, just at the edge of the 30-yard circle. He sensed a bit certain level of desperation in the Sialkot batters' shot selection, because they're not getting free runs here. Or runs freely rather. Again a single. And that has resulted in around a run rate of 6.4. And they know it
for good that they need a good score around 170 to make a match of it. They won the toss and chose to bat. Down the wicket, split it high in the air is an opportunity and taken. So that's what happens when desperation is there in your shot selection. That was somewhere round the corner, and that kind of a shot will come out, and Afaq takes the catch, dismissing Salman. Pressure was building, something had to give. Salman took the chance. Yasir has been bowling beautifully. Good flighted leg spinner. He never got to the pitch of the ball. He had to drag it in the end and wasn't able to clear Afaq in the deep. That is a good breakthrough for Abbottabad. Sialkot struggling. 2 down now, 61 for 2. There you go, one of the more familiar faces in the cricketing world when it comes to T20 cricket. Shoaib Malik walks in, and that is not unfamiliar territory for him. He's been here so many times. Look at those games, 520 games, closing in on 13,000 runs. That average is phenomenal. Strike rate is great as well. 79.50 Sikandar. That is incredible. And Sialkot needs him to be at his very best today. Karen Pollard has over 618. So together these two and Bravo, they'll take the number over 1,500 matches between 3 players and still fit. 3 you named are in a league of their own. Bit of a smile. The wicketkeeper Sajjad has been very vocal. Yasir has got a bounce about himself. Over the years you've seen Yasir when he's bouncing around, bounding in. That is when he's at his very best. Another very good over comes to an end. At the halfway stage, Sialkot behind the 8th ball, 62 for 2. That was the wicket. It went miles in the air but had no distance on it. Beautifully judged by Afaq. He had plenty of time to get underneath it. And wickets will slow down the progress of any innings in any format. More so in T20 cricket. Tahir now, his responsibility is doubled now because he's the set batter. He needs to give this innings some impetus. 10 overs to go. They'll need to score 110 more. At least. Khalid is going to keep that pressure on. And as a bowler, you here just need to bowl the good lines within the stumps and wait for the batters to get desperate and make mistakes. Just like that, within the stumps. Time and again we see the T20 bowlers, they try to do different things to get a wicket. Not required right now. The dot ball pressure will extract something for them. The current run rate is now slipped further. It's exactly 6 runs and over from 6.4. They need a couple of big overs somewhere and soon. Oh, he's got that bottom edge. Was that a chance? Was that a chance? Surely. Can't blame the keeper. Tough one, yes. Technically a chance, but practically almost impossible. Just bounced off his boot. He was lucky, he could have come back onto his hands. Oh, the ricochet almost allowed the batters a single. Yeah, those chances, you've got to be really lucky to have any possibility.
off the toe end of the bat, went right down to his boot. Yeah, Tahir's got to take some chances. He's batting at 32, make that now 38. And allow Shoaib to bat right till the end. Some calculated risk is in demand at the moment. 11 gone, 69 for 2. Khalid Usman had bowled a beautiful over up until that point. He got greedy. This one, he just gave it a little bit of air. He's looking to buy the wicket of Tahir. But look at those long levers going through the ball. An unusual spot to hit the slog sweep. Almost straight down the ground. Incredible hit. 11 gone, 69 for 2. Boundary coming after 4 overs, exactly 24 deliveries. Yasir Shah will bowl his second over, his third over rather, from the pavilion end. 1 for 8. This will be a good contest between Yasir Shah and Shoaib Malik, who's on strike. Projected, you'd probably say 10 and over, or a little more, 2 big overs somewhere. Wickets in hand. They get on a roll. That 10 and over is quite possible, even the 12 and over. But somebody would have to play an exceptional knock. Shoaib Malik is very capable of that. So is Mirza Tahir. You feel Yasir Shah got away with that one. It was sliding down the leg side. Would have been a wide anyway. A great evening, slightly chilly. You can see some jumpers over there as well. Good time to have a cup of tapal tea. The lounge has been kept pretty busy. Oh, knock tip. There you go. Tahir was struggling with that hamstring. Going for the pull shot. He just fell on his stumps. He's in pain. But I don't know if that pain is more than the pain of losing his wicket. Because when he gets up, he will have to walk off. He's been dismissed. Well, second time in 2 days we've seen a batter hit wicket. Don't blame him much because he's having a painful right knee from before. And when he tried to go on that back foot to smash one on the onside, all the body's weight was on that knee. And he couldn't balance himself and fell on the stumps. This is a legit delivery. But he's been given hit wicket, so no need for front foot. There, the weight is on that right foot, which is already in pain and doesn't hold the weight of the body. He falls onto the stumps. Yesterday, Imran Butt smashed his bat onto the stumps, and today Tahir has fallen onto the stumps. So the third wicket goes 70 for 3. Sialkot's innings has slumped further. Yasir couldn't believe his luck. And Tahir still in pain. He's holed up in the proceedings, but Tahir is dismissed, so he would have to walk back. He's hurt and he's dismissed, so he should be hurting on all counts. 38 he made. Sialkot 70 for 3.
wow, what's happening here? Big shout. Little nervy, you could tell the Sialkot batters, they're nervous. New batter in was Usman Khalid. Don't mistake it with Khalid Usman, who's playing for Abbottabad. They did pitch on, straighten a little bit, but look at that. He was back, and then the overthrow resulted. We all know Shoaib Malik can run very fast. It had to take into the account how his fellow partner can respond, whose first ball was very, very nervy. Quick. Sialkot definitely need to rebuild, and time is running out. Another swing and a miss, a little bit of turn, not enough to knock that off stump back. Yasir cannot believe his luck. But that was a beautiful delivery. Look at that flight and then that turn. Wow. He's having a lucky day. Usman Khalid. Sialkot struggling, 12 gone, 72 for 3. Come on, guys. शानदार बैटिंग कर देता है, लेकिन वो ग्लेन मैक्सवेल 2.0 बनने में कामयाब ना हो सके कराची में, जहां पर उनकी ज़रूरत भी थी, और साथ साथ शोएब मलिक की टीम को अभी भी ऐसे ट्रिकी मोमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। कामरान गुलाम आ गए गेंद करने के लिए, लो ट्रेजेक्ट्री के साथ ये गेंद करते हैं, लेकिन इतनी लोअर और इतनी बाहर इसकी तवक्को ना थी। वाइड के साथ शुरुआत की है, शायद अब स्पिनर्स पे ही रिलाई करें अगले चंद ओवर्स तक। मरीना बिल्कुल, टॉस पे भी ये बात की थी यासिर शाह ने, और इनका नाम भी लिया गया था। कामरान काफ़ी नफीतुली बॉलिंग ज़रूर करते हैं, और शोएब मलिक को आसान नहीं होगा बॉलिंग करना। स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर है शोएब मलिक, पैरों में इनकी बिजली भरी हुई, और इनके रहते हुए उस्मान को खास तौर पर अपने टोस पे रहना पड़ेगा। ये एक को दो में कन्वर्ट उस अंदाज से करते हैं जैसे कोई 16 साल का चाको चौबंद लड़का भाग रहा हो, दूसरी जानिब उनको यस कहना पड़ेगा अपने कैप्टन की कॉल पे। क्रीज पे नए हैं उस्मान, और अब तक वो शायद उस टारगेट को डिफाइन नहीं कर सके शोएब मलिक जिस तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन क्लियरली 160 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि पिच ने अब तक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। ऑफ द बैक फुट हवाई रास्ता दिया, और गेंद फील्डर के सर के ऊपर से जाती चली गई। पहले रन्स लगाने के लिए छक्का ही लगा दिया उस्मान ने। गलती कर बैठे कामरान, यहाँ पे बहुत टाइम मिल गया था उस्मान को। बैक फुट पे जाके रॉक किया, जल्दी पिक की, और इनका कोई इरादा नहीं था इसको नीचे खेलने का। थोड़ा तेज गेंद था, ड्रिफ्ट जरूर हुआ, लेकिन अच्छी एलिवेशन और अच्छा फासला हासिल किया 6 रन्स के लिए। एक मरतबा फिर पहला रन तेजी के साथ बड़ा लंबा फासला तय करना है, बाउंड्री लाइन से भाग के, लेकिन पहुंच जाएंगे। शायद इब्तिदा में शोएब मलिक के जहन में 2 रन चल रहे थे, जो अब तक इससे पहले लेगेसी थी सियालकोट की, जिसका शोएब मलिक ऑब्वियसली पार्ट रहे हैं। उसमें ना सिर्फ एक हार्ड हिटिंग एबिलिटी, बल्कि जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट थी वो भी उसका हिस्सा थी। कंडीशंस को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से असेस करते थे, और अपने टारगेट्स को भी उसी हिसाब से रिवाइज करते थे। और ये शोएब मलिक का खासा है, घाट घाट का पानी पी हुए, जगह जगह उन्होंने क्रिकेट खेल रखी है, और इनके होते हुए जो तजर्बा ट्रांसफ़र होगा इन खिलाड़ियों में, वो इन द लॉन्ग रन और सियालकोट की टीम के लिए सीजन में भी माने रखेगा। अच्छी हिकमत अमली से हमेशा बैटिंग करते हुए नजर आए, और साथ लेके चलते हैं अपने पार्टनर को। पहली मरतबा फीचर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में
अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की वजह से सियालकोट की टीम में शामिल होते हैं, लेकिन आज उनको एक लंबा सफ़र पॉसिबली तय करना है और शायद शोएब मलिक ने यही रोल उनके लिए डिफाइन किया है कि वो अब लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल शुरू करें और शोएब मलिक थ्रू एंड थ्रू इनिंग्स के आखिर तक जाएं। हवा में और राउट, बड़ी विकेट हासिल किया है कामरान गुलाम ने, जिसके लिए लाए थे इनको कप्तान वो कर दिखाया। एतजाज जमीन इन्होंने पहले कैच ड्रॉप किया था, लेकिन इस बार गलती नहीं की क्योंकि दाव पे बहुत बड़ी विकेट थी। शोएब मलिक जो कि माने जाते हैं मंजे हुए खिलाड़ी हैं स्पिनर्स के खिलाफ, इस बार गलती कर बैठे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था और मेरे ख्याल में लेट भी थोड़ा सा अटेम्प्ट किया इस कट को। यहाँ पे रेगुलेशन चेक जरूर होगा, लेकिन कामरान गुलाम ने कोई गलती नहीं की। एक बड़ा झटका जरूर हासिल हुआ है, ये वो विकेट नीचे खेल नहीं पाए इस कट को। अच्छा कैच और कामयाबी हासिल की। हमजा नजर आने वाले खिलाड़ी जो कि अपना अवलीन सीजन में खेल रहे हैं, एक नुमाया इनिंग्स अब तक खेलने में कामयाब रहे हैं और दो ऐसे बैट्समैन अब यकजा हो गए क्रीज पे जो कि नवारिद हैं सियालकोट की टीम में और इनको अपने टारगेट को नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा। सो शोएब मलिक का फैक्टर अब रिमूव कर चुका है एबटाबाद। इससे बेहतर स्टार्ट शायद वो 13 ओवर्स के अख्तिताम पर अपने लिए तसव्वुर नहीं कर रहे होंगे। गो के सियालकोट की एक शानदार लेगेसी रखने वाली टीम है जिसके लिए आए हमजा, लेकिन नए सिरे से इनिंग्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है और अब ये फाज़ अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आने वाले ओवर्स में बाउंड्रीज को निदात करके और विकेट्स को रेगुलरली हासिल करके वो 150 के वेल नीचे रखने की कोशिश करें। बॉलिंग अच्छी बीट कर रहे हैं, यासिर शाह लाइन में चूक गए वरना और जोरदार अपील कर सकते थे। अच्छी पेस से भी गेंद कर रहे हैं, अच्छी लेंथ से थोड़ा स्किड हो रहा है बॉल। यहाँ कामरान गुलाम ने हासिल की कामयाबी, टॉप ऑफ द बाउंस रह के कट नहीं कर पाए, इसलिए हवा में गेंद गया और कोई गलती नहीं हुई कैचिंग में। बड़ी विकेट कुछ देर हवा में खेले थे तो दोनों ऐसे स्पिनर्स रहेंगे अब नेम ऑफ द गेम। आने वाले शायद चंद ओवर तक कामरान गुलाम विकेट हासिल कर चुके हैं। आदिल नाज का एक ओवर बाकी है, फयाज खान ने 2 में 12 दिए हैं। तो अब अचानक से कामरान गुलाम को आजमाने की वजह से ऑप्शन अब वाइड ओपन हो गए हैं एबटाबाद के लिए और अब शायद ये जो प्रोजेक्टेड स्कोर इससे पहले ये समझ रहे होंगे 160 के बियॉन्ड जाने का, अब इनको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं 140-150 के करीब। शानदार कमबैक किया एबटाबाद ने। ज्यादा इन्हिसार भी स्पिनर्स पे ही करते हैं। यासिर मुसलसल 8वां ओवर स्पिनर्स ने किया है। यासिर शाह, कामरान गुलाम की बात करें, उस्मान खालिद की बात करें, इनको अच्छा रोटेट करते हैं। यासिर शाह लीड कर रहे हैं एबटाबाद की इस टीम को, जिसमें खालिद उस्मान, यासिर शाह इनकी सूरत में मंझे हुए तजर्बाकार क्रिकेटर्स के साथ साथ कई टैलेंटेड नौजवान खिलाड़ी भी हैं जो कि अपने टैलेंट दिखा पाए हैं। ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे ने मुतासिर किया। खूबसूरत डिलीवरी, बैकफुट में बीट हो गए, कश्तियां जला चुके थे, कोई दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद नहीं उस्मान के पास। यासिर शाह का तूती बोल रहा है कराची में। मिस कर गए इस बार, लेट हो गए थे, बैकफुट पे खेलने जरूर गए थे, लेंथ भी थी, थोड़ा सा स्किड हुआ गेंद के लिए। बहुत ही नफी-तुली बॉलिंग करते हैं, बहुत ही ओपन हो गए थे, गेंद थोड़ा सा अंदर आया जिसको रीड नहीं कर पाए। लगातार विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। उस्मान अब पवेलियन वापस लौटेंगे, कुछ ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए, 9 रन बना के वापस 85 for 5। तजर्बेकार बिलाल आसिफ आने वाले बैट्समैन हैं जो कि कुछ देर के बाद अपनी ऑफ स्पिन का जादू तो जगाएंगे जैसा अब तक किया यासिर शाह ने, लेकिन उससे पहले चंद बड़ी हिट्स उनको चाहिए जो कि करने के वो अहल ज़रूर हैं।
सियालकोट को दीवार के साथ लगाए, रेगुलर इंटरवल में विकेट्स के साथ 23 रन का इंतजार करना पड़ा था पहले विकेट के लिए। बिलाल आसिफ ने बड़ी तादाद में मैचेस खेल रखे हैं हर फॉर्मेट में। T20 में वो मैचेस की 50 मुकम्मल करने के करीब हैं। T20 डेब्यू में सेंचुरी बना पाए थे, लेकिन इनकी असल वजह शोहरत और बड़ा काम ऑफ स्पिन। कामयाब ओवर मुकम्मल यासिर का 85 पे 5। ये वो विकेट लाइन मिस कर गए थे इस मर्तबा, थोड़ा सा स्पिन हुआ था, कोई खास प्लानिंग नजर नहीं आई थी। अफसरदा जरूर है लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बॉलिंग की है स्पिनर्स ने, काफी नपी तुली बॉलिंग की और साथ में विकेटें भी हासिल करते रहे। ये अंडर 19 के प्लेयर्स यहाँ लुत्फानंदोज हो रहे हैं, एशिया कप की तैयारियों में भी मसरूफ हैं। ये खुशाइन बात है, यहाँ पे आके फ्यूचर स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं इस बैल्कनी में। यस, इसी कंपाउंड में इनका कैंप लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इनमें मुस्तकबिल के बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम अकरम, वकार यूनुस सभी कहीं ना कहीं ठके छुपे होंगे। साद बेग की क़यादत में मशरक़ वस्ता में होने वाले इस वर्ल्ड कप, ये एशिया कप के लिए जा रहे हैं, जहां पर ये अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ा मौका है क्योंकि अंडर 19 का जो लिमिटेशन लगाई गई थी इस टूर्नामेंट में, उसकी वजह से ये पूरी टीम अपने भरपूर पोटेंशियल के साथ खेल पाएगी। दूसरी जानिब सियालकोट को अपने नौजवान खिलाड़ी और एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ बड़ी हिट्स की ज़रूरत। अदरवाइज पहले यहाँ पर वो फाटा से एक यादगार मुकाबले के बाद पड़ती हुई बारिश में, जो कि मरीना आप तो आ जाई हैं लेकिन शायद हैरत का बायस हो कि आती हुई सर्दियों में कराची में बारिश हुई, लेकिन जहाँ क्रिकेट हो और बारिश के साथ आ ही जाता है, उसमें उनको शिकस्त कंसीड करनी पड़ी थी डीएल मेथड के मुताबिक, और आज एक और बड़ी शिकस्त हो सकती है। 8 ओवर के बाद फास्ट बॉलर की आमद हुई है। फयाज गेंद करने के लिए आए तीसरे ओवर के लिए। थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी सियालकोट को यहाँ पे। फास्ट बॉलर आए जरूर है, स्पिनर्स का जो एक ग्रिप बनाई हुई थी एबटाबाद ने, वो थोड़ी सी लूजन हो सकती है। यहाँ पे सिंगल डबल्स पे ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए, और अगर कोई लूज डिलीवरी आए तो उसको टारगेट करें, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रिजॉर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लाइंडली अटैक करते रहेंगे तो मजीद विकेटें गिरती जाएंगी और रन ज़्यादा बटोर नहीं पाएंगे। बाउंस मिला, ऑफ द बैक फुट खेलने की कोशिश की थी। बिलाल आसिफ अपनी सिर्फ दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे। फयाज को मोमेंट जनरेट करने का मौका मिला है इस पिच पे, जहां पर वो लग रहा है कि बज़ाहिर किल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर बेग जो कि विकेट्स के ऊपर गिर बैठे थे, अपने बैलेंस को गवाते हुए अपनी दाईं नी पे पॉसिबली लग रहा है कि आइसिंग करके अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो थे उस तक सूरत हाल बड़ी इनके हाथ में मौजूद थी। 38 रन बनाकर आउट है। पहले ट्विस्ट हुई थी नी उनकी, जब रन मुकम्मल करके मुड़ रहे थे, उसके बाद फिर शॉट खेलते हुए भी प्रेशर पड़ा। बिलाल आसिफ थोड़ा सा लग रहा है कि लेट आ रहे हैं बॉल पे। फयाज अच्छी लाइन लेंथ, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ज़्यादा इन्हिसार इनको यही करना चाहिए कि सिंगल डबल्स की तरफ जाएं। डॉट बॉल्स भी प्रेशर क्रिएट करेंगी। बेहतरीन बॉलिंग है। ख्याल ये भी हो सकता था कि स्पिनर्स के साथ कंटिन्यू करते, जो कि ट्रिकी डिसीजन होता है इस मौके पर जब आपको बांध के रखा हो, लेकिन फयाज ने लिव अप किया है। उस हार्ड वर्क को उन्होंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया, जो कि स्पिनर से मुसलसल 8 ओवर फेंक के इनकी विकेट्स ऊपर तले हासिल करके शिकंजा कसा है। 4 विकेट्स अब तक स्पिनर्स के नाम रही हैं। राइट इनटू द ब्लॉक होल, मॉडर्न डे का आउटसाइड द ऑफ स्टंप का यॉर्कर, परफेक्टली पिच, हिलने का मौका नहीं दिया बिलाल को। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, जिसको घुमाने का मौका मिला, लंबा चेज है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। कीमती चौका हासिल किया बिलाल के पहले 4 रन।
इस बार चूक गए थे लाइन में भी, लेंथ में भी। फयाज अच्छी गेंदें कर रहे थे आउटसाइड ऑफ स्टंप, हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बिलाल के लिए। लेकिन इस मरतबा कह सकते हैं फ्री भी थी क्योंकि जो लाइन थी वो फील्ड के मुताबिक नहीं थी। गेंद को आने दिया अपने पास, अच्छी एफर्ट जरूर थी लेकिन 4 रन रोकने में कामयाब नहीं हुए फील्डर। खराब लाइन पे गेंद कर दी थी मरीना गो के। प्रोडक्शन है बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर, लेकिन बड़े गैप्स बने हुए हैं, इसको मजीद भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फ्रंट ऑफ स्क्वायर। नो बॉल, गेंद शानदार थी लेकिन ओवर स्टेप कर बैठे और इसी बात से मजीद हाथ खोलने का मौका मिलेगा। और ये 20 ओवर के गेम में वो लिटिल मोमेंट्स होते हैं जो कि अचानक से मैच का पांसा ना भी पलटे तो टीम्स को दोबारा अलाइव जरूर कर सकते हैं। जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था एबटाबाद के स्पिनर्स ने वो थोड़ा सा इस ओवर में लूज हुआ जरूर है और ये मौका सियालकोट के पास है कि ज्यादा एक्सप्लॉइट करें इन चांसेस को। क्लियरली ओवर स्टेप कर गए यहाँ पे फयाज, एक बड़े ओवर की तरफ जा सकते हैं। बिलाल स्ट्राइक पे मौजूद हैं, इस फील्ड में तब्दीली नहीं कर सकते। फ्रीड की डिलीवरी के लिए सामने बिलाल आसिफ ही मौजूद है, लेकिन बच निकले। पूरा खींच के गेंद की वहां तक तवील कामत बिलाल को पहुंचने का मौका न दिया। अच्छी वापसी की फयाज ने, 5 बाकी 91 पे 5। यस, कराची की बात करें और दिसंबर के महीने की तो शायद अब तक सर्दी आई नहीं है, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं कुछ जैकेट्स दिखाई देंगी। लेकिन जपाल टी का पूरा जोबन चल रहा है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। और अगर आप सर्दी के शौकीन हैं तो उसके हवाले से भी हम फोरकास्ट करते चलें। आयत चाहती है कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं सुना, और 3-4 दिन में यहाँ तक पहुँच जाएंगी। बैक टू बैक मैचेस हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में और बड़ी जहाँ फिशानी के साथ सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। नॉट ओनली द स्क्वायर पिच भी और उसके साथ साथ ग्राउंड की प्रिपरेशन। जितने सुकून में नजर आ रहे थे ग्राउंड स्टाफ के, उतने ही एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द मैच भी और उसके आसपास भी। बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी इनको, जिस मेहनत से और लगन से ये काम करते हैं, क्रिकेट को मुमकिन बनाते हैं। अच्छा सिंगल, ये ऑन साइड पे वर्क किया, ये बहुत जरूरी होगा। रोटेशन और स्ट्राइक बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज मैटर जरूर करती हैं इनके ओवर्स में, लेकिन जिस तरह का होल्ड स्पिनर्स ने रखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज ऑफ स्ट्रेटजी नजर आनी चाहिए सियालकोट की तरफ से। बिलाल ने अपने डांसिंग शूज को वेयर किया, हवा में उठा दिया और किसी के पास कोई मौका नहीं है। बड़ी शॉट लगाने का मौका मिला जिसकी जरूरत थी सियालकोट को। डबल फिगर्स में पहुंचे बिलाल। बहुत बड़े टर्नर नहीं है खालिद उस्मान, जानते हैं बिलाल के एंगल के साथ गेंद अंदर ही आएगा, इसलिए बहुत जल्दी पिक की थी। ट्रैजेक्टरी हालांकि लो थी लेकिन कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया। फुल ब्लडेड शॉट थी ये। खतरे में आ गए थे दिल हलक में बिलाल आसिफ और सियालकोटियों का, लेकिन बचत हुई। बड़ा मोमेंट जनरेट कर लिया था ऑलमोस्ट खालिद उस्मान ने। ऑन साइड पे खेलने चले गए थे, तकरीबन साइड ऑन हो गए, निकल गए हैं और फिर खतरे में गेंद हवा में और उसके नीचे आकर ऑलमोस्ट कोलोयन को वाइड किया। अनीस ने कैच को मुकम्मल किया और आखिरी लम्हात में अपने साथी के साथ जो कोलाइड कर बैठे थे अहमद, उसको भी अवॉइड किया। बिलाल आसिफ 10 रन के और 1 चौके और 1 छक्के के मेहमान साबित हुए। 1 टू मैनी शॉट्स, ये कहना गलत नहीं होगा। लगातार टारगेट कर रहे थे खालिद उस्मान को, छिक्का हासिल जरूर किया था लेकिन उसके बाद दोनों गेंदों पे थोड़े क्लूलेस नजर आए और थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी नजर आया खालिद उस्मान की जानिब से। काफी तजर्बाकार बॉलर हैं, दूसरा एंगल से चेक करना पड़ेगा। यहाँ कोई मसला नहीं है, वापसी होगी बिलाल आसिफ की। एक बार फिर ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन लाइन को कवर नहीं किया था, आसान कैच दे पर यॉक भी कर लिया था। दोनों लग रहा था बेताब थे कैच के लिए, लेकिन अनीस ने उचक लिया दरमियान से। छठा नुकसान सियालकोट को और जहां सेटल हो रहे थे वहीं पे वापस भेजा बिलाल आसिफ को। सर्कल ना शाबा।
ऊपर चले नुकसान सियालकोट को कोई भी ऐसी पार्टनरशिप नहीं है जो कि मुकम्मल पनप पाई हो 4 ओवर बाकी सियालकोट दीवार के साथ लगा हुआ 98 पीछे .98 for 6. Sialkot, very disappointing batting effort. You expect a lot. Herrera was the first one to go, showing the bowler all the 3 stumps. That was an easy take as well. Tahir Beg was hampered by that leg injury. He went, and then the huge scalp. Shoaib Malik. No partnerships whatsoever. Salman looked at C from the beginning. And Bilal Asif, 1-6 and out. 98 for 6. That is a desperate situation there for Sialkot. Look at those 4 wickets. No partnerships of any note. And when that happens, 98 for 6 is not a surprise at all. Adil has been very impressive. Asif Yaqub rules that this one was sliding down. Probably rightly so. Yeah, he's been very disciplined. But this one going down, definitely. Bowled beautifully early on in the circle with the new ball, Adil. And that is the reason probably Sialkot is in this position. Because of him and the new ball bowlers, the way they bowled. 58 for 1 was in first to 9 overs, and then after that it's 40 for 5. I still believe, Faisal, it was the first few overs that put pressure, and courtesy to Adil. Look at his figures: 3.2 overs, 17 runs, 1 wicket. He bowled quick within the stumps, did not let Sialkot get away with that quick start they were hoping for. He's been very impressive throughout the tournament. He set the tone earlier on with that dismissal of Herrera, although you can argue with the kind of technique that Herrera showed, was very loose on that occasion. And after that, that huge wicket of Shoaib Malik in the middle. Yeah, you're right, Ali. That opening spell really was a handy one against a very experienced Sialkot side. Knocks him over again, full and straight. And the big hitting abilities of Abu Bakr, we'd have to wait for another night to see them, because he's on the bike right now. Yeah, I'm sure Malik was high praises of him, but here is flopped. And again, consistent bowling, good bowling. No problems there. That's a perfect landing for a fast bowler. That's the reward you get when you bowl stump to stump. You miss, I hit. It's that simple. And I wonder what he was trying to do early on. The team wanted him to stay, but he has to go back. Bowled Adil 99 for, guess what, 7. Muhammad Ali Daisy, the big fast bowler representing Sialkot. He must be very proud, but his team is in big trouble here against a very good Abbottabad team led beautifully by Yasir Shah. Yeah, Faisal, going back to the toss again and talking about the decision that Shoaib Malik took of batting first. This is the second time that he has done it here, and both the occasion not working for him. Earlier they were beaten by Fata. Oh, that's wide. Oh, beautifully taken. That's where Abbottabad have been spot on with their fielding. I think they've been excellent. That's the added pressure on Sialkot. Sajid has been very vocal behind the stumps.
equally as athletic as well. Look at that. That was sliding down. Good couple of yards, and then that left hand. Beautifully done. Wonderful work. Yeah, there's definitely a smile on your face when you see a good wicketkeeper, Faisal. You being a wicketkeeper yourself, will have a look at him again, and you will have to describe us the technique. Good run, very good run. Let's have a look at the wicket again. He's been rewarded of some consistent good bowling within the stumps. That's the quality. Look at that. Timbers. Wide of the crease, angling in and hitting middle stump. Yep, you deserve it, young man. You bowled beautifully. Look at that smile. Coming back to the same discussion, Faisal. Shoaib Malik winning the toss and batting first again. And again, the team is in trouble. What do you think? What is the reason? Why did he try to do that when every captain has tried to bowl first? Well, he's vindicated in a way because he said that he trusted more of his bowling than his batting, because he said his bowling was the stronger suit. So he must have been hoping that Herrera would come good, he himself or Mirza Tahir Beg, top heavy Sialkot. But the rest were really disappointing. I mean, they left a lot to be desired in terms of their technique and application. This man was a big wicket. Yeah, the remaining have not been really tested in Sialkot's batting order. Hamza Nazar has an opportunity here. Good bowling again. Very good bowling. They're going to try to get to and will be successful. Good running. This is the best they can do from here on. Play out the remaining overs with positive intent, and it's been hit. It's Hamza Nazar. A lot depends on him, but this is not a good news. Looks fine though. It was a hard throw coming from the deep. Hit him on the wrist, which is the bony part. Ouch. And it's a bit chilly outside. If you see, there's very strong breeze blowing outside and the temperatures have gone down. Well, just remember those faces. This is the Pakistan under-19 squad. They'll be leaving for the Asia Cup pretty soon, which begins from the 8th of December, and that will be in UAE. Yeah, they're going to UAE under the leadership of Saad Beg. We wish them all the luck. May you succeed. These are the future stars. As you said, remember these faces. You're going to see them a lot in Pakistan cricket in coming times. Yeah, not just the Asia Cup, but soon after there will be the World Cup, which has been moved from Sri Lanka to South Africa now. These selected ones, or the chosen ones, will have the honor of representing Pakistan at that world event. Ghulam is getting some turn as well. You all thought under lights probably the ball will slide on and batting would become easier. Is it the application or is it the pitch? I'll put Ali on the spot after this delivery. That's big. Field is coming around, but he won't get it. That was a much needed maximum, and Sialkot could do with a few more of these. Yep, that's one way of doing it. Just go big. Put the pressure back on the bowler. That's what Hamza did. It was in his slot. And again, the clarity in mind that he wanted to go big, wanted to go over the head of the fielder. It's good feeling. That is where Abbottabad has been spot on. I think we saw some lapses from Fatah in the previous game. But unlike them, Abbottabad is making life tough for the batters. They fielded well, they've caught well. Just one chance gone down. But other than that, they've been brilliant in the field. It's pretty straight, angling down probably. Mukeet had a good look at it. Kamran delivered it from pretty wide of the crease.
Probably that saved Hamza. Yeah, that could only have saved him. It's touch and go, but yes, would have missed the leg stump. Good decision by the umpire. Oi, ball coming. 170 was the par score, the captains thought, but I don't think so. Sialkot is going to get near to that. What is the good total? They might have to revisit, look to play out these remaining deliveries, 13 deliveries. From here on, if they can get to 140 to 45, I think that would be a good total. From where they are, they would take it with 12 deliveries to go. Sialkot in huge trouble, 113 for 7. The boys again, the future stars. Tayyib Arif also in the squad. Ali Asfand also, left arm spinner. Got to have your eyes on him. Saad Beg, right hand, the captain in black jersey. Just zoom it a little. He's your captain. All the best. Themselves when they're watching themselves on the big screen, brings out that smile. Good luck, young men. There'll be more occasions that they'll be on TV. Don't worry about that. Just do well. That's all we want them to do. We'll definitely be cheering from them. And all these games, there's plenty of mediums where you can watch them. Chance, Kamran Ghulam, they would not take a chance on his arm. Look at him moving in so quickly. That shows the dominance of Abbottabad in the field. They've really scared the life out of the Sialkot batters. Absolutely, you make a good point. The fielding, they've been spot on. And Yasir Shah has led them brilliantly. The fielding positions, having the right fielder at the right position, all these things matter. And they've done brilliantly well. Yeah, these are small points in the big scheme of things, but they all matter. You're right, Ali. It's full toss, not a clean hit. Just a single. That is, you can say that this ball sums up Sialkot's innings. There have been opportunities. It's just that they haven't been able to put the bad balls away. They haven't been able to put the pressure back on Abbottabad, even when they had the opportunity. And Sialkot with 114, 10 deliveries to go. Can they get up to 130? 130 should be a minimum. Yeah, at least 130. I'm hoping they can get to 140 because 130 is not going to challenge them. Again, very well fielded. That's KG. Kamran Ghulam for you. I think that not having Fakhar Zaman, they had to field well, and they did. They had to make a difference of 15 to 20 runs in the field, and they've done it quite brilliantly. Yeah, look at that. That'll give you a good picture how quickly he moved. He stayed low. Remember, he's a left-hander, but this was to his right. Great speed and agility from Kamran Ghulam. Well, talking about 130, and then even then, Shoaib Malik will have to do some magic. He's a very shrewd captain. He would have to be at his very best. Really? Deciding to bat first, I don't think so. That was a smart move. And a couple of times here at National Stadium. Brilliant bowling. Block hole. Superb. That is what you want to see from your fast bowlers. Yeah, that execution has been good as well. Obviously, the plans, it just hit the crease, the batting crease. You cannot do any better than that. Angling away, left arm over the wicket angle, sneaking under the bat of the batter. You're talking about Shoaib Malik's decision. Probably he knew the prowess of his batting. He didn't want to put them under pressure whilst chasing. He thought the best option would be if they have no pressure and they could put some total on the board. But all the big guns didn't work, and the young ones really fell short of the standard that is required at this level.
Another good one. Well, Kamran Ghulam, he had to do it because we praised him so much. He had to make a mistake. It can happen to the best of us. I'm talking about you. Praise the wrong person at the wrong time. That's why I'm very shy when I praise you, because I don't want you to do anything wrong. Thank you very much. Looking good. They bowled well. Mohammad Ali, 3 wickets he took in the last game. But now with the bat, what can he do? How can these two finish this inning? Can they get the momentum? Straight to the bowler once again. Good piece of fielding. Probably saved a couple of runs for Yaz. And a dot will finish over number 19. 116 for 7, Sialkot. He's trying. We know his capability. He's a good test match batter. He's got a good defense, Mohammad Ali. We've seen him play some crucial knocks with the bat. He can defend well. But I'm not sure about his batting abilities in T20 cricket. 19 gone, 116 for 7. Abbottabad dugout really content and happy. Managers, coaches, Saqib Fakir, Majid, Zahid Said, they're all pretty happy. It's been a good team effort. You have to say that. And now they just got one more over to finish the job. Don't want to let it slip at this stage. So Shahab will have to be on the button. One expensive over. He's got a chance to redeem himself. At first delivery, Sialkot would have thought if they had proper batters in, that was an opportunity for the taking. Yeah, although Hamza is a proper batter, but just missed out on this opportunity. Leg side-ish. They could connect, it would have gone for a 6. 116 for 7. He got underneath it. Fielder's coming around and takes it. Easy as you like. That man, Kamran Ghulam, is everywhere. And Hamza's knock has come to an end. He tried, but his efforts weren't good enough tonight. Yeah, he had to go big. Cannot blame him. Again, a very good catch from Abbottabad fielders. This time was Kamran Ghulam. No problems there. Perfect landing. Low full toss. Had to go big. No connection. That's why they say low full tosses are always difficult to head away. And a comfortable catch. As easy as you like it. Hamza Nazar has to go back. 15. It's 116 for 8. Right in front of us. 116 for 8 at the moment. Big trouble for Sialkot as Sohaibullah Khan comes in. 104 the strike rate. 23 runs he has scored. Fantastic bowling. They've been brilliant throughout this inning. Abbottabad bowling stuck to the task. They knew how to bowl, where to bowl, and this is just one example. Low full toss. Just not getting that elevation. Hamza Nazar and a simple catch to Kamran Ghulam. Look at that. Eyes on the ball. As easy as you like it. Abbottabad won't mind singles.
yeah, 117, not coming in the not much coming in the last over. Muhammad Ali now on strike. How would you entertain yourself as a fan if you're watching this game and not much happening? Yeah, we do entertain each other in the middle of the two games with some tape ball cricket. It's in the air again. Four fielders converging on it. And Shahab drops it. Not an easy chance. He had to cover a lot of ground. And also there was other men coming in. Won't cause too much damage at this stage. Just a couple of runs. That was in the air for a long, long time. The bowler decided he's going to go there himself. It was not enough. Almost he reached there, it's just gone through his hands. But he was not in any sort of position to get it. As you said, might not damage much. Couple of runs taken. Once he got there, you would have felt that he should have caught it. Swing and a miss. Muhammad Ali swinging like a rusty gate. Not to good effect. 119, that's all Sialkot could muster. And that is after winning the toss and deciding to bat. Skipper Shoaib Malik was hoping for 170, and they have fallen a long way short of that. Absolutely, Faisal. From 62 for 2 to 119 for 8 in 20 overs. Shoaib Malik will definitely be disappointed when he won the toss and looked to bat first. He was hoping to get to 170, but when they lost Herrera early on and then Tahir Beg hurt himself, the remaining batters who didn't have much exposure in this tournament, they were all over the place. Credit has to be given to this unit, the way they've stuck to this plan. They filled in brilliantly. They bowled excellently with the new ball as well as in the death bowling. They've been just brilliant, Abbottabad. Take a bow. They have been indeed, and they're in the huddle in the middle. They're really congratulating each other. That's what we discussed in the pre-match as well. Their togetherness, their spirit, playing for each other. It was all evident in those 20 overs. As we watch those youngsters again, the Pakistan under-19 boys getting plenty of attention. But all the attention and the praises at this moment should be for this Abbottabad side, because they have done a wonderful job in the first half of this game. Absolutely. All praises for Abbottabad and Yasir Shah, the way he's led his team. This is not something that Shoaib Malik will be proud of. 38 for Tahir Beg, 15 for Herrera, Salman 13, and after that, the wickets started falling. Malik 6, Usman 9, Hamza 15, and Bilal 10. There were not enough runs on the board, just 119 for the loss of 8 wickets in 20 overs. Excellent effort with the ball and in the field from Abbottabad. Adil Naz once again very impressive, 2 for 22. Probably was the pick of the seamers. Yasir Shah, the evergreen Yasir Shah, 3 for 12 of 4 overs. He was really a catalyst in the middle of that part where they really strangled Sialkot and squeezed the life out of their innings. Wickets also for Shahab and Khalid Usman. All in all, an excellent effort with the ball and in the field. Like I said, they caught well and their ground fielding was good as well. Well, it's time to go downstairs. Our colleague Akil Samar is down there with Kamran Ghulam. Yes, ever smiling Kamran Ghulam. आज तो और मुस्कुराने का मौका मिला होगा. 120 का टारगेट आपके लिए फिल वक्त आइडियल लग रहा है. जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे लड़कों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की. आदिल नाज ने और यासिर शाह, खालिद उस्मान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, तो 120 रन का टारगेट. पहले मैच में शिकस्त हुई थी, उसके बाद अब सियालकोट जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ आपको नादिर अपॉर्चुनिटी मिली है जीतने की. आपने खुद बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग की. पहले ओवर में आपको मलिक की विकेट मिली, तो स्पिन बॉलिंग का किरदार आपको लग रहा है ज़रा मोहतात खेलना पड़ेगा आने वाली इनिंग्स में. जी बिल्कुल, विकेट पे आई थिंक थोड़ा सा ग्रिप हो रहा है, बट स्कोर लो स्कोरिंग टोटल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसको आराम से चेस करें. दरमियान में स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं एबटाबाद में. जो जी बिल्कुल, फास्ट बॉलर तो काफ़ी अच्छे होते हैं एबटाबाद का, आपको पता ही है. तो आदिल नाज ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल सब ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू.
lot was expected from this innings of Sialkot. It started on a bright note. Pereira with his usual through the line drives. But then that was a sloppy dismissal. Pereira will have to have a look at this dismissal. Tahir Beg flourished for a little while, but then wickets started to tumble. The second half of the Sialkot innings were all wickets, not many big hits. Tahir Beg succumbed to that pressure on his right knee. He was already injured. Boundaries were few and far between, but the wickets were plenty, and Shoaib Malik's one was the big one. The rest of the pack really crumbled under some pressure. Bilal Asif hit a 6 and he was out immediately after that. Adil Naz returned to get some cheap wickets. Tail tried their best, but to no avail. And in the end, a tame 119, all that Sialkot could muster. The target would be 120. When we come back in just about 5 minutes, the run chase will begin. Until then, let's have a short break. Gone through. You get a feeling that should have been stopped. And there you see, once again, the feet did not go anywhere. Oh, kharab line, frustrated. Down the wicket is an opportunity taken. Oh, knock tip. Tahir was struggling with that hamstring. बॉबे और राउट बड़ी विकेट हासिल किया है कामरान गुलाब ने।
Abbottabad need 120 to win this match. Should not be difficult. 6 runs and over. They bowled well and need to replicate that with the bat. Good all-round bowling performance from the Abbottabad bowlers. Didn't really allow the Sialkot team to take off with the bat. The run rate always hovering around 5.5, 6.5 runs and over 20. And the decision of winning the toss and batting first from Shoaib Malik hasn't worked, and it's been twice it hasn't worked. One in a rain-shortened 15-over-a-side game. They won the toss and batted first, and here again. They do have the bowling, they do have the experience. It's a good mixed bag of youngsters and seniors. If they get good wickets in the power play, they might test Abbottabad, but at the moment shouldn't be a problem. This pitch is pretty good for batting. So it's really a game for Abbottabad to lose. Shouldn't be a problem. Really, let's see how they start off in the power play. Now all they need to do is be sensible. Just 120 runs, 6 runs per over. They play proper cricket, conventional cricket, that should do. And on the other hand, Sialkot will have to do something special, something out of the box. Early wickets is what they want, just to put the pressure on Abbottabad. This is a young side, batting is their weakness. Can they exploit it? That's the question for Sialkot to answer. They'll have to be spot on with their bowling early on, catch well, field well, make every run difficult for Abbottabad batters. That's how you put pressure. Sajjad Ali, just 5 games for him, 79 runs, impressive strike rate of 136.20. Just play normal cricket, that's all you can do. Anis Azam from Haripur, that was a batter. Good district performance. Here's the bowler, start of the proceedings for Sialkot. Sohaibullah is the bowler. One slip in place for Sohaibullah. Early wickets is what they want. Oh, that was mighty close to that set of stumps from that inside edge. Saw the width and he just went after it. Yeah, that's where they have to be very selective in their shot selection. This was way outside the off stump, no footwork whatsoever, all hands. He's lucky that he did not drag it back to the wickets. They do need some luck, Sialkot, early on especially. Because if they don't get early wickets, it will be over soon. Slightly fuller, just knocking it to mid-on. Ball's coming nicely onto the bat, we've seen that. Don't know, it's the bad shot selection really from Sialkot. And after Hurrera's wicket, we said that there was a certain level of desperation in stroke making, trying to get those big hits, and it just didn't work for them. 14 wickets for Sohaibullah. Talking about Sialkot batting, if you look at their batting lineup, they heavily rely on Hurrera, Tahir Beg and Shoaib Malik. Other than that, there is no proper batter in their lineup. Bilal Asif, Hamza Nazar. Bit of shape. And once you lose Hurrera early on and Tahir Beg injuring himself, it was very difficult for them to recover from there. Shoaib Malik tried, but was not enough. He fell and there was nothing really. Hamza Nazar, Bilal Asif, Abu Bakr, Shoaib Malik, talked about him at the toss. It looked very ordinary. Usman Khalid again, very ordinary. So they don't have much depth in their batting lineup. Just a couple of good batters, that's it. They will struggle against quality sides for sure.
And one thing Sialkot can do here is field well and not be desperate. This was a desperate throw. This could have gone anywhere. Just don't give them extra runs. Make life tough for them. Make every run difficult. That's how you will put pressure and look to get wickets. The slip is out. I don't like that because you need early wickets. There's a fielder extra cover. Shoaib Malik, the captain. He played well. In the rain shortened game you were talking about earlier, scored 70 odd but was not enough. Again, in that game too, Shoaib Malik opting to bat first. Is doing something what other captains haven't done. Still need to ask him that. What is the reason behind it? Because it's not working. Even if he's trying different things or a new thing, it's just not working. First over done, it's 2 for no loss. Shoaib Malik, the captain, definitely need to ask him that question. Why do different things when it's not working? Why bat first? And not just one occasion, but a couple of times. And it has backfired. You know, this tournament is it's going to go down till the wire end. If you don't win early matches, other teams are winning. There are very strong teams. Peshawar's domination. Karachi White's looking good. Rawalpindi also very good. Mohammad Ali took 3 wickets in the previous game. 3 for 9 is best coming into in the last game. Early wickets. Mohammad Ali. You would expect Mohammad Ali to swing that ball because he's known to be that. He's someone like Abbas. Given the conditions, he will test you, especially with that new ball. Look at that shape away in the air. Just that curve that takes it away from that right-hander. Anis Azam in place of Fakhar Zaman. Played for Haripur in district cricket, 434 runs at the average of 54.25, 103 50s. Look, let's see what he can do. Life is easier at district level, but it really gets tough here at National Bank Stadium when you've got quality opponents. Mohammad Ali, the Pakistan Test fast bowler bowling. This will be his real challenge. Can he be at his best? That's the question. Shoaib Malik will try make life difficult for the batters. And if you look at their batting also, there is inexperience. Just Kamran Ghulam and then Khalid Usman. These are the 2 batters I can remember. They've got experience. Afaq, Mohammad Shahab, Ahmad Khan. They're all new to this level. Catch it was the call, but he's done enough to clear that 30-yard circle for a boundary. First 4 of the Abbottabad innings. If you have to drive in the air, make sure you play it away from the fielder. It wasn't that short, but it wasn't that full rather, but he had gone for it. Full swing of the bat. Lucky that it flew over the head of the fielder. It's a good boundary to have early on. I can see Shoaib Malik moving around these fielders. We see a deep point fielder in place. That is where Shoaib Malik will have to be spot on with his field positioning. It's good that he has got a slip in. Third is inside. There's a deep square leg in place too. Testing times for Shoaib Malik and Sialkot. He's opened up that backward point area, pushed the man deep, and he's got a gully and a slip. With that ball moving away from the right hand and knowing that Anis is having a go at it. If he goes hard at it, then that first slip or gully can come into position. Now that is more of a widest short third, but I'll still call it a catching position with that new ball. There they are. It's got a leg slip
well, I would call it, well, very fine, short fine. So they're all catching positions with that new ball. That's exactly the reason, because he's going out and going hard at the ball. The ball may just fly to short third and short fine. Yeah, it may and may not. The ball is swinging. I'd like to have another slip here. If you can get one more slip, just be more attacking. Forget about the third. Bring him to the slip position. That's the best he can do, because they're not defending a big target, just 120 runs. The reason, since he's going so hard at the ball, he's not poking at it, it might go over the second slip. That's what I feel. Just because of that. 2 overs gone, 6 for none. And that goes just past and gone for a 4. He's going hard at everything. Yeah, slip. No slip. At least there should be one slip. The last over, Shoaib Malik took the fielder out of the slip. And that's exactly where the ball has gone. That is not good captaincy by Shoaib Malik. You need to get them out. You'll never be able to defend this total. They need early wickets, and if you don't have a slip, it's not going to work. I still believe, Ali, that that shot, that boundary went over the slip cordon. Even a flying slip would have missed it. But you're right. I mean, I would agree at the part that he's angling the ball, left arm bowler, angling it across to the right-hander, so that there's a high chance the ball will go from that region. But it's really, really, really tough to say that if it goes straight into the slip's hand or over them, since he's flashing at it. Let's look at his side. Well, that's not side down. That's another delivery. Try to look at it side on if we have it. Oh, okay, but if ideally that could tell you how high the ball was. He's picked it up. And he's dispatched that to the cow corner. Has it gone all the way? As a boundary signaled by the umpire. And he's Azam, 434 runs in district, showing why. You can see his approach, his intent pretty clear. He's a hard-hitting batter. He's got that approach, he's got that technique also, just clearing his left leg, picking up the length, and playing it where there was no fielder. That's good batting. That's one way of doing it. Just put the pressure back on Sialkot, because they're desperate for the wickets. If you don't get them wickets, the body language will definitely go down, because they're just defending 120. You see how far it's gone. On the bounce to third. Yeah, absolutely. It's gone higher than that, slip fielder, but maybe you can have it. Maybe some good delivery. It might go into the fielder's hand, but having no fielder at all will not help even. You got to have a fielder there at the slip, especially for him, because he's angling it away from the right-hander. This one, yes. The previous, maybe yes, but maybe another one will go into the hands.
got to have a fielder, got to give the chance to the bowler to get our wickets, because they're not going to defend it. They're going to take wickets. Otherwise, it will be over. It's not working. Just not working for Shoaib Malik. Shorter length, and he's asking for trouble. A couple of feet inside the rope and a one bounce 4. This is easy pickings. 3 boundaries in the over. It's already 20. Yeah, I like it. 4-1, 4-1, 4. That's how they're playing. They're hitting a boundary, rotating the strike. Again, hit a boundary, rotate a strike. That's good cricket from these two youngsters. This just bounced. It does. So 4 runs will be signalled. That is good batting by Abbottabad. They've quickly moved on to 20 for no loss. The required rate has come down to 5.8. I just don't agree with these tactics of Shoaib Malik, especially the fielding positions. This is not going to work for Sialkot. It did not work in the last game. It's not working here also. Cut away, bad ball, too much width. Another boundary, 4 in the over. 24 for none after 3. It's getting way too easy. Poor bowling outside the off stump. They've been scored all over the ground in this over. Mid-wicket, square leg, third point, everywhere. He's been hit for boundaries. 24 for none. And let's have a look at the over. This one flew over the third. Again, a single, good cricket. Over mid-wicket. Again, over third. Single taken. Square leg. 4 runs. Single taken. In fact, this one was a point boundary. Good cricket. Boundary following up with a single. That's how you do it. That's how you do it. 96 required of 102 deliveries. It will be over soon for Sialkot. The first time at a bigger stage at National Bank Stadium. They're not scared. They're going after them. And it is paying off for them. Modern day cricketers. That's what they do. They show the intent. They go after you. That's how you do it. That's very deliberate. The smart cricket there. He just pushed it enough to beat that short third. It is a very intentional shot. Again, no slip. What are we seeing? What is Shoaib Malik doing? Look at that. He just guided it. Had there been a slip, would have gone there straight to the fielder maybe. They can't do that. You need to have a slip. I think he played the shot because the slip is not there. It wasn't an edge. Absolutely. But maybe if the slip was there, he would have tried something else. Exactly. He wouldn't have played that shot. Maybe we were gone to mid-on fielder. Whose side are you on? Are you happy with Abbottabad batting this way? Just quality cricket. That's all I want to see. Quality cricket. Yeah, nicely done. Keep it close to the body. The previous over, a lot of width was provided, which was allowing the batters to flash their bat. The partnership of just 21 deliveries. Sajad and Anis doing it for Abbottabad. We all thought that losing Fakhar Zaman in this game might hurt them. But they've done brilliantly well in their fielding. And now their openers doing it for them. Gone. Another boundary.
He'll keep going hard at it, and he'll keep getting those happy edges, but nothing in the slip cordon. It's everything going over. I hope this one would have gone to the slip. I hope you agree on that. Second slip would have done it. Only if Mohammad Irfan is standing on top of Mohammad Irfan. Why not to have a slip? Why not? They keep on edging it. They're not having a slip. Now there's a fielder. Fly slip. That's a good captaincy. That's a good move. This is right place, like you were mentioning. Have him a little deeper. He's standing at first slip, but a touch deeper. Is it too late? Got that edge. Now that's what Muhammad Ali can do. Keep it close to the body, and that had good rising height to it. Takes the shoulder of the bat. Regulation catch for the keeper. And finally they have their man. Yeah, they were living dangerously. No problems there for Muhammad Ali. Extra bounce again. Good line, yes, extra bounce doing him an easy catch for the wicket-keeper. Thank God they didn't need a slip fielder. And Isa Azam has to go back, scoring 18 runs. It's 32 for 1. Right man to have. Kamran Ghulam. He's got a job to do. He has to stay there till the end now, because he's the senior member in their batting lineup. But what a brilliant delivery that was from Muhammad Ali. Kicked on from the right length. Wicketkeeper making no mistake. Thank you, Asif Yaqub. Just tidy work, just tidying him up. Still not properly done, but will do. Lots of edges. But there is no doubt about this talent. 123 the strike rate, 100 at this level, 450s. 32 for 1. Now there's a slip, a conventional one. Thank God. He's the right man to have at this point. Kamran Ghulam, 4 overs gone, 32 for 1. यस, पहली विकेट हासिल करने में कामयाब रहे अली, जिन्होंने बाउंस दिया, सरप्राइज किया बैट्समैन को, अपनी जगह पर मुंजमद खड़े रह गए, जो कि शायद तैयार नहीं थे, और अली ने वो किया जो वो करते आए हैं पिछले सीजन से लेकर आज तक, और T20 क्रिकेट में भी अपनी एबिलिटी का भरपूर मुजाहरा पेश किया। लेकिन कितना फर्क ला सकेगी ये विकेट, शाह फैसल? इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में तो एक विकेट काफी नहीं, और ज्यादा आउट करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो लेंथ थी और जो लाइन थी और जो राइज हुआ बॉल, जिस तरह तवील कामत अली का, ऐसा लगा आपको कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अली उस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन उनकी जो आइडियल लेंथ है और जो उनकी एक्स्ट्रा हाइट है, जिसकी बिना पर उन्हें बाउंस मिलता है, वहाँ पे वो एडवांटेज मिल सकता है। टॉल फास्ट बॉलर्स हमेशा इंजॉय करते हैं एक्स्ट्रा बाउंस ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पे अली की सिलेक्शन नहीं हुई। वो कैंप का हिस्सा ज़रूर थे, तो सेलेक्टर्स के दिमाग में ज़रूर था उनके बारे में, लेकिन वो बदकिस्मती से जो फाइनल टूरिंग पार्टी है उसमें जगह नहीं बना पाए। और दूसरी जानिब आए हैं उस्मान, जहाँ पे स्पिनर्स ने राज किया था मुसलसल 8 ओवर तक पिछले इनिंग्स में, वही रिपीट करना पड़ेगा इनको। गो के उसमें शायद अपनी गलतियां ज़्यादा थी, सियालकोट की रिसीविंग एंड पे गए थे, लेकिन विकेट टू विकेट बॉलिंग और फिर यासिर शाह का जादू सर चढ़ के बोला था।
क्विक काम किया विकेट कीपर ने, लेकिन सिर्फ अब स्टंप्स को रीगैदर करना पड़ेगा। अच्छे बॉलर लगे हैं उस्मान, काफी विप है उनके एक्शन में। एक मरतबा फिर एक्स्ट्रा बाउंस, पहली गेंद पर भी एक्स्ट्रा बाउंस मिला था। यहाँ कामरान गुलाम काफी तेज हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट का जवाब नहीं। दोनों बैटर्स के दरमियान अच्छी तालमेल। बड़ा दिल से कामरान गुलाम हाई बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं, जो रिकॉर्ड रन्स बना चुके हैं खुद भी फर्स्ट क्लास सीजन में, लेकिन T20 क्रिकेट में भी इन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए अपनी एबिलिटी का भरपूर मुजाहरा पेश किया था विनिंग कॉज के लिए। और जब आप बड़े बैकलिफ्ट के साथ आते हैं तो रेंज ओपन हो जाती है और ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। अली मौजूद थे, गेंद उनके हाथों में लगने के बाद निकल गई। लेजी वर्क और यूं ऑफ द मार्क होने का मौका मिला कामरान को। लेजी वर्क फ्रॉम डेजी। 2 रन का इजाफा, ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं है सियालकोट के पास, जिस तरह का टोटल उन्होंने हासिल किया। रन हासिल हो गए। कामरान गुलाम को विकेट पे हाथ खोलने का मौका मिल गया। मजीद सहूलत देगा एबटाबाद को ये चौका। गलतियों की बात की और यहाँ चूक गए उस्मान, लेंथ और लाइन दोनों में। और कामरान गुलाम तो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इस विकेट पे आपको कट शॉट देखने को मिलेंगे। ये भी एक अच्छा एक्सिक्यूट किया हुआ कट शॉट था कामरान का। 7 रन दे दिए पहले ओवर में उस्मान ने, लेकिन 8वां रन भी चला जाएगा। मिसफील्ड पे मिसफील्ड करते हुए गलतियों से भरपूर ओवर। उस्मान के हौसले भी पस्त और साथ फील्डर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे। इंतहाई गैर जरूरी तौर पर स्लॉपी फील्डिंग। 5 ओवर मुकम्मल 40 पे। इस ओवर की ये दूसरी गलती थी और अली को शायद स्क्वायर ऑफ द विकेट फील्ड करने का तजर्बा नहीं है। ये जो मैट पड़ा हुआ है स्क्वायर पर, पहले यहां से चूके और ये तो शुएब मलिक थे। ऐसा कम कम आपको क्रिकेट फील्ड पे देखने को मिलता है कि शुएब मलिक मिसफील्ड करें। और एक मरतबा फिर गैप तलाश करने में कामयाब। गो के जिस्म से दूर थे, गेंद भी हवा में खेले, लेकिन कामरान गुलाम को रन्स भी मिल जाएंगे। और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए छोटी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। लेंथ से भी बीट हुए और मूवमेंट से भी, लेकिन हाथ चलाते चले गए, शॉट रोका नहीं उन्होंने। गेंद हवा में जरूर गया लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। अच्छा ललचाया मोहम्मद अली ने। सियालकोट के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उन्हें चांस लेना पड़ेगा इस तरह आगे बॉल करके स्विंग के लिए कि बैटर्स को गलती पर मजबूर करें। इस मरतबा गेंद गैप में से निकल गई। ज्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नहीं था, लेकिन एबटाबाद की इनिंग्स बढ़ते हुए कामरान गुलाम ने पिछले सीजन में पाकिस्तान कप में भी अमंग द टॉप स्कोरर्स मिडवे थ्रू तक जगह बनाई थी और उसके बाद पाकिस्तान के कैंप में इनको मदऊ किया, लेकिन वहाँ से जो सिलसिला टूटा, गो के वो अपने लिए हासिल करना चाहते होंगे कॉल, चूँकि कराची में पाकिस्तान कप भी खेला जा रहा था और यहीं पे वहाँ टेस्ट मैच भी खेला गया जिसके स्क्वाड में ये गए, लेकिन वहाँ पे चूँकि प्लेइंग 11 का हिस्सा न बन सके और उसके बाद से वो रब्त एक तरह से टूट गया, जो कि बैट्समैन के इन फॉर्म पे जब आप हों तो तभी आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और कई खिलाड़ी थे, तैयब ताहिर थे, कामरान गुलाम थे, जो कि पिछले सीज़न में वहाँ पर इस कशाकश में थे कि वो प्लेइंग 11 में पाकिस्तानी टीम में आ सकें और वहाँ से शायद अभी तक उतने अंदाज से अपने आप को लिफ्ट नहीं दे सके हैं अपने फॉर्म के हवाले से। मूवमेंट मुसलसल अली को मिल रही, इस मरतबा थोड़ी वाइड थी, काफ़ी ख़राब शॉट था सज्जाद का, गैर ज़रूरी तौर पे कदमों का इस्तेमाल किए बगैर खेले। अली की बात कर रहे थे जो उन्होंने विकेट हासिल की, उसके लिए जिस तरह बॉलिंग की उन्होंने पिछले ओवर में, ये आप लेंथ देखिए,
बैक ऑफ अ लेंथ से गेंद को ये मूव करा सकते हैं। यहाँ खुशकिस्मत साबित हुए बैटर। एरी फेरी ड्राइव था जो कि गैप में गया और ये लेंथ यहाँ से उन्होंने बैट्समैन को बैकफुट पर धकेला और जो एक्स्ट्रा बाउंस को कोप करने में नाकाम रहे। इसी की मैं जिक्र कर रहा था कि आपको ऐसा लगा कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे थे अली। फिर बैकफुट पर धकेल दिया बैटर को। ये इनकी नेचुरल लेंथ है, बैक ऑफ अ लेंथ, और जब यहां से मूवमेंट मिले तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। यस, पिछला सीजन इनका शानदार गुजरा था। गो के जिस अंदाज की इनको पिचेस पे परफॉर्म करने का टेस्ट सीजन में मौका मिला वो शायद बहुत मुश्किल थी, और ख़ासतौर पर एक ऐसे बॉलर के लिए जो कि इंटरनेशनल तजर्बे से आ रही हो और सामने इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट मौजूद हो। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश की और वापस आए हैं सियालकोट की टीम को ज्वाइन करने के लिए। मेन स्टे बन गए अचानक से, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग के शोबे में। आज शायद इतना टोटल नहीं है कि जिसमें उस विकेट के बाद कोई माने बना सके। शानदार डिलीवरी, चेंज किया अपनी लेंथ को, बैट्समैन को सरप्राइज किया इस इन जिपर के साथ। ये चेंज अप डिलीवरी थी, अभी तक वो आउट स्विंग कर रहे थे, इस मतलब बॉल को अंदर लेकर आए। तो मुश्किल बर वक्त पल्ला जो है वो नीचे लाने में कामयाब हुए सज्जाद। ऑलमोस्ट उनके डिफेंसेस को तोड़ती हुई निकल गई थी ये गेंद। तीसरा ओवर है ये अली का। सियालकोट के पास ऑप्शंस नहीं है, तो शायद उन्हें अगर चौथा ओवर भी करा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। शुएब मलिक शायद ये सोच रहे होंगे इस वक्त। एक और मरतबा पहली दफा नहीं उठा पाए, लेकिन रन एक ही मसर था। पावर प्ले मुकम्मल और एबटाबाद के लिए स्टेज सेट है एक आसान टारगेट के पीछे 46 पे। वो जो प्लेइंग 11 में पार्टिसिपेट ना कर पाने की बात की थी कामरान गुलाम ने, बड़े अजीब व गरीब सर्कमस्टांसेस में अपना डेब्यू किया था। जो कंकशन के लेटेस्ट रूल्स आए अब से लगभग 2 साल पहले, उसके में जब आप एक पूरे खिलाड़ी को उसके अपने पूरे रोल में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ याकूब ने कंफर्म किया कि फील्ड वाइड स्प्रेड हो सकती है। वहाँ पर हारिस सोहेल और उनके दरमियान जो मुकाबला जारी था कि कौन प्लेइंग 11 में जा सकेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें हारिस सोहेल ही के कंकशन के कंसीड करने के बाद इनको आने का मौका मिला। लेकिन फ्लिक किया, इम्प्रोवाइज किया और बड़ा लंबा चेज तय करना पड़ेगा जब तक पहुंचेंगे 2 रन का इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तो उसके अलावा कोई ऐसा इंटरनेशनल मौका अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे बैट्समैन के लिए जो कि रन्स पे रन्स करता आ रहा हो 2 सीजन से, सिर्फ एक सीजन की बात नहीं है, वनडे वाइट बॉल रेड बॉल, और फिर अगर आप जिसमें शायद वो जो प्लेइंग 11 आपकी इंटरनेशनल बनती है उसमें जगह हासिल करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता भी नहीं है। लेकिन अपने आप को वहाँ पर अनलकी कंसिडर करते हैं कि आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट से भी अपने आप को निकलता हो तस्वर करें और इंटरनेशनल टीम में भी जगह ना बना पाए। अच्छी बॉल थी। जी हाँ, ये बड़ा एक ट्रिकी सी डिबेट आप कह सकते हैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो आप समझते हैं आपका हक है कि इंटरनेशनल में आपको कॉल अप किया जाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतनी कम होती है पाकिस्तान की, और ज़्यादातर टेस्ट यूनिट जो है वो बहुत सेटल होता है। तो एक पहलू तो ये है कि आप परफॉर्म करें, दूसरा पहलू ये कि टीम में जगह भी हो, कोई बैटर आउट ऑफ फॉर्म हो या कोई बैटर रिटायर हो, तो तब आपको मौका मिल सकता है। अभी अहमद शहजाद की भी जो डिबेट चल रही है, उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ऊपर तभी मौका मिलेगा जब पाकिस्तान की टीम में जगह होगी। इस मरतबा फिर निकलना चाहते थे लेकिन फौरन रिकवर किया वहां पर नौजवान फील्डर ने। बटर फिंगर सियालकोट के किसी भी फील्डर के हाथ गेंद लग नहीं रही। क्या ये इस बात का इशारा है कि कुछ ड्यू है, कुछ नमी है आउटफील्ड पर? लेकिन रन ज्यादा नहीं है सियालकोट के पास, तो ये 140 150 होते तो मुकाबला बेहतर हो सकता था यहाँ पर। थोड़ा बोलेंगे यार, बड़े दिल से। जगह हासिल हुई थी, विड भी मिली, लेकिन गैप में ना खेल पाए। सिंगल के साथ उस्मान का ये ओवर बेहतर था। 4 रन दिए, 50 मुकम्मल हो गए एबटाबाद के, 1 के नुकसान।
पावर प्ले एबटाबाद के नाम रहा। खुशकिस्मती ने अभी उनका साथ दिया, अच्छे स्ट्रोक्स भी देखने को मिले। बैकफुट के स्ट्रोक्स आपको ज्यादा मिले, जिसका ये मतलब है कि बाउंस विकेट में अच्छा है, और ये विकेट भी उसी बाउंस का शाखसाना था। कामरान गुलाम भी स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कट शॉट पे चौका और रिस्क की बाउंड्री हासिल की। मुकम्मल कंट्रोल में है इस वक्त। 7 ओवर्स के बाद 50 पर 1, सिर्फ 70 रन मजीद बनाने हैं। और अब जबकि पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, देखते हैं कि सियालकोट अपने ऑफ स्पिनर्स शोएब मलिक और बिलाल आसिफ को किस तरह यूज़ करते हैं। बिलाल आसिफ आ गए हैं गेंद करने के लिए पवेलियन एंड से। शाबाश शाबाश, गुड लक बिलाल भाई। खराब लाइन के साथ शुरुआत, एक्स्ट्रा का रन भी हासिल होगा कामरान गुलाम को। यस, फेमसली इन्होंने 2 सीजन पहले फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इस डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। 1249 रन्स कामरान गुलाम, और उसको गो के वो एक बहुत बड़ा अपने लिए उन्होंने मेयार और पोल सेट कर दिया था। उस लेवल तक शायद आप हर सीजन में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट भी चेंज हुआ, लेकिन ये सीजन भी उनका डिसेंट आउटिंग अब तक जारी। और लोहा जब गर्म हो उसी वक्त चोट करने का मजा आता है। ये हम बार बार बात करें इस बैकड्रॉप में कि आया चाहता है इस टूर्नामेंट के अख्ताम के साथ ही PSL का ड्राफ्ट। बिलाल आसिफ भी सियालकोट की तरफ से काफी अरसे से खेल रहे हैं, और ये कल के मैचेस 2 मजीद कड़े मुकाबले। 2 की कॉल है कामरान गुलाम की, फील्डर पहुंच जाएंगे लेकिन कामरान गुलाम को रोक ना पाएंगे 2 रन से। अच्छे रनर हैं कामरान गुलाम, फिट खिलाड़ी हैं, और ये कल के मैचेस 2 स्टार स्टडेड टीम्स हैं। पेशावर की अब तक 2 में से 2 मैचेस जीत पाई है। लाहौर ब्लूज को दोनों हारने के बाद बड़ा कमबैक करना पड़ेगा, और फिर कराची वाइट्स एक मरतबा फिर अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी लाहौर वाइट्स के खिलाफ। दोनों वाइट्स की ये डर्बी होगी, लेकिन लाहौर और कराची की रावल। दोनों एक मैच जीत पाई हैं, एक मैच में शिकस्त हुई है। बैक टू बैक मैचेस रोजाना हर टीम के लिए। इसके अलावा 2 मजीद सेंटर्स इन एक्शन है, क्रिस क्रॉस करते हैं। अगर आप साहिली शहर कराची में, तो साहिल के बिल्कुल करीब है NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ शहर के दूसरी जानिब शुमाल में मौजूद UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर ये मुकाबले 1 साल जारी। और अब तक अच्छे अंदाज से वर्कलोड को मैनेज किया गया, कि 2 दिन का गैप था पहले मरहले के बाद, लेकिन इसके साथ कुछ को मौका ही है। मोहम्मद अली, शादाब, नवाज, इन तमाम खिलाड़ियों की सूरत में रावलपिंडी से। आराम से देखिए होगा। अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं इस रन चेस को कामरान गुलाम। वो भी ज्यादा बिग हिटर नहीं है, कन्वेंशनल बैटर हैं, बिजी क्रिकेटर हैं। 7-8 रन की एवरेज हो तो उनके मतलब का रन चेज होता है, और आज तो उससे भी कम है। एबटाबाद 58, 1 के नुकसान। शाबाश। 62 for 1 with the boundary at the start of the over. The left arm spin has played through covers, nice and easy. As we've been talking about, it's a good pitch to bat on. If you apply yourself, Kamran Ghulam is a proper bat.
They've got no pressure whatsoever in terms of a target chase. They're halfway through already. Just 58 of the remaining 70 balls. So the only way Sial could have or can win this is by bowling them out. Yeah, the full tosses just won't do. And they certainly don't look like getting them out the way they have been bowling. And a seasoned player in shape of Kamran Ghulam and Sajjad at the other end. They're putting up a decent partnership. You go back and pay a visit to the Sialkot batting. Is just a list of bad shot selection and building up pressure on themselves by not getting enough strike rotation, and that resulted in desperate shots being attempted. And they never got into that gear that they wanted to get those 160, 170 runs. And the process kept losing wickets. Yeah, if you actually see Sialkot's batting card, we will know the number of deliveries faced by the batters against the number of runs that they managed to score. Have a look at that. 21-13 Salman, Malik 10 balls, 6 runs. So you just get a clear picture. Yes, the batters seem short of ideas, lacked strike rotation, and at times poor shot selection, and not selecting the right time to go for the big strokes has been the reason. And also you've got to give credit to the bowling of the other team, who have Abbottabad, who bowled these kinds of deliveries where these batters were obviously frustrated and they got into those strokes which were not on. So credit to the bowlers, and I think Sialkot have not been able to put a decent display that you relate to their kind of team. And they have a very outstanding record of this tournament, but here twice now this season in National Stadium they have come in, won the toss, opted to bat first, and then have not been able to put up a decent show with the bat. And it's so important in T20 format. Usually we see that sides batting heavily rely on a good start, especially in the power play, by their openers. And we saw, we'll just get back to that after this delivery, where Shoaib Akhtar is bowling his brand new over. They got around 40 odd in the power play. Herrera getting out. He's got 2 big scores only against Fata, otherwise he's been dismissed early. Maybe a stroke of luck was required. Tahir was looking good, but he injured his knee and fell over his stumps. Second hit wicket in the tournament. But then after that, or apart from that, it's just been a bit of a struggle there, really, for all the batters to score runs of the bat. Wow, that's a boundary again. Can't expect more or much from the bowlers when they have a very small total to defend here. Yes, Sikandar, and we've seen batters playing conventional cricket play on these conditions with ease, and batters who try to force the issue, they haven't been that successful. This one, once again, a beautiful stroke, using the pace of the ball, just hitting it in the gap, and the rest was then history, 4 runs. So both these batters taking their time. Obviously they just need less than run a ball, and there is no pressure on them. Sialkot, it's an easy single. So it amazes me, when you require wickets to win, how can you not have catching positions and expect others to do it all for your team? They will not hit it in the air and keep losing wickets. They know they require less than run a ball. So you need an attacking fielder, maybe a slip, maybe somebody closing in on the ones in the circle, and then ask the batters to go over them. And there is no more experienced captain than Shoaib Malik in the circuit, especially in this tournament. So you have to look to take wickets. Otherwise, having mid-on at long on the boundary, square leg, fine leg on the boundary,
3 fielders in the ring on the offside, 1 at short mid-wicket. This is a regulation field where they can just make it run a ball. You know, at the toss, Shoaib Malik said, why I want to bat first is nothing to do with the conditions. It's about putting my bowling under that pressure to see what they can do. And this is some time where the bowlers will feel it to defend 120. How can you say that? This is just the start of Super 8. What sort of a statement is that, where a captain is taking trials of his bowlers, what they do like this? I think they needed to win this game, first priority. And obviously get into the semis, make sure that they are in the semis, and then you can do this trying and testing stuff. But if that's what you said, if that's what he said, that doesn't make any sense in this scenario. Maybe it's about exactly what you said, about to put them under a certain level of test. Maybe I'm just going to ask my statistician to tell us that have they been doing very well bowling first, so he wants to try something else. They won their first game in the Super 8. This is their second one, but twice he's opted to bat first. The bowling has not been able to defend 170 in 15 overs in that game against Fata. Today, of course, a shorter score and not much can be done. And Bilal Asif again, desperate dive. Second time in the over is the boundary there. Well, if they go back to their previous game at the National Stadium over here, they could not defend 148 over here. And it's 74 for 1, 10 overs gone. And again, this one was timed, short and wide, outside off, and very nicely timed for the boundary. So it's all too easy for the batters, and it absolutely is a no-brainer. It's an absolutely no-brainer. So if you were to play in a tournament and get to the Super 6, and in the second game you're looking. But the Tapalti goes on. Whatever is happening inside, this is a place where you can enjoy tea when the wind is blowing. It's cool in the night. This is the best seat in the house to enjoy Tapalti. आराम से आराम से And when Ahmad Butt isn't there, not in the playing 11, and we haven't seen him in the field. So with the bowlers not being there, the regular ones, how can you defend the target? How can you even look to defend the target? Obviously, being a premier batter and as a captain, you will take that responsibility on yourself. So putting it on the young bowlers is just, all I can say is it's beyond any cricketing comprehension. He hasn't bowled himself yet. So maybe Sialkot just want to find out their best playing 11. So it's kind of a trial game for them. And then once they have it, they can start pushing their case for the semis. That'll be easy boundary. That's the third time in what, an over and a half that backward point has been the chosen region for a 4. Score moves to 79 for 1 in the 11th over. They're racing away now, just 41 away from victory. Quicker one, shorter in length. A cut was always on the offer. Got to give it to Abbottabad, as you said, they bowled so well. Remember last outing of theirs in this ground, they were a little all over the place. They lost the game. Maybe the bowlers weren't used properly. Khalid Usman wasn't given his full quota. The man on your screen was never tried on a wicket that was slow and low. And that resulted in a loss. There, he skied it. He's going to take some catching. And it's gone. The bowler takes it on his own.
That's the best possible thing, he calls it. Hamza takes the wicket, cotton ball, and Kamran Ghulam has been dismissed at the stroke of the 11th over. Kamran Ghulam goes, and a front foot check. It's absolutely perfect, half an hour. And we are dead sure that a catch has been taken cleanly. It was that high, and the batter Kamran Ghulam wanted to hit it over mid-wicket for a 6 and only edged it, going high up, and found the bowler underneath. So second wicket gone. Kamran Ghulam got 26 of 21, 80 for 2. Afaq Ahmed, the new batter, in. $80 for 2 after 11. 120 to get to win this, so 40 runs is the margin which they need to score and get home. Bilal Asif will bowl his second over, none for 8 before this. So in the 11 overs, Bilal Asif, the senior one, has bowled just one. Shoaib Malik hasn't bowled any. Seriously, looks like that Shoaib has a plan to just give his younger bowlers the try and pose a challenge in front of them to defend this total. So maybe Ali Yunus can ask a question or two from Shoaib in the post-match, what the strategy and plan was, and where he feels they went wrong. That's the single you were talking about, should be stopped inside the circle. That's the catch, cotton bowled. Hamza Nazar takes the catch of his own bowling, dismissing Kamran Ghulam. So Bilal Asif is one of the very rare of spinners present in the circuit of Pakistan domestic cricket. One is from Peshawar, Sajid Khan, and the other one is Bilal Asif. And he took 6 wickets on test debut against Australia. And then kind of disappeared. And this one has gone with the arm, and there's an appeal, and the leg umpire will check it with the third umpire and to see if that has been stumped. So as we speak of him, this is one of his specialities where he can make the ball go the other way, bowl that dusra. And not many bowlers do that with a proper swing of the arm. We have had people in the past bowling dusra except Saklan Mushtaq, but definitely there was some problems with the actions. And here the front foot check is absolutely perfect. And see. So it's something to be checked with a microscopic view. And yeah, this will tell us
will give us a better idea. He's out. He's outside. He's still outside. Now he's coming down. Now that's the part. The toe, of course, is on the line. The other part of the boot is in the air. This will be some decision from the umpire. Umpire Tariq Rashid is there as the TV umpire. And he's fast and quick. Out. That's well done. 81 for 3, and Bilal Asif strikes in over number 12. बिलाल आसिफ विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। सियालकोट को मजीद विकेटों की जरूरत है। अहमद है नए आने वाले बैटर और ये है वो मंजर। अच्छा ग्लव वर्क देखने में नजर आया। काफी पीछे थे लेकिन बहुत देर कर दी थी वापस क्रीज में आने में भी, लेकिन कीपर ने इस मौके का फायदा उठाया। अच्छी बॉल थी, बीट हुए, टर्न देखने को मिला और यही खासियत है बिलाल की। बहुत जबरदस्त ग्लव वर्क था, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं किया और टाइम जाया करने को था भी नहीं क्योंकि बहुत करीबी मामला था। अच्छा फैसला थर्ड अंपायर का भी। उस्मान ने इन पैचेस अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा एक्शन है, क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, गेंद को काफी रेव्स गेंद पर डालते हैं। इसका मतलब है कि विकेट पे जितनी भी मदद मौजूद है उसके चांस को मैक्सिमाइज करते हैं। काफी कन्वेंशनल एक्शन है इनका, जिसकी वजह से इनको मदद भी हासिल होती है। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में थोड़ी इनोवेशन लानी बहुत जरूरी होती है और जो आप बात कर रहे हैं एंगल्स का यूज करना, वाइडर आना, थोड़ा सा स्टंप्स के करीब भी ये आते हैं। जब आप रेव्स की बात करते हैं तो रेव्स बॉल पे होंगे तो तभी ड्रिफ्ट भी मिलेगी, और जिस तरह ये लास्ट बॉल भी ड्रिफ्ट हुआ, ऑलमोस्ट यॉक हो गए अहमद। विकेटें हासिल की यहाँ पे मोहम्मद अली ने एक, बिलाल आसिफ और हमजा ने भी एक एक विकेट। यहाँ पे जल्दी से 2-3 विकेटें अगर सियालकोट हासिल कर पाती है तो तभी एबटाबाद पे कुछ प्रेशर आएगा। शॉर्ट और वाइड, चेज बेसूद होगी क्योंकि फील्डर की पहुंच से दूर। यही मसला रहा है उस्मान का, अच्छी बॉलिंग करते करते एक बाउंड्री बॉल दे देते हैं और इस लेवल पे इस तरह की गलती आपको बख्शी नहीं जाती। बहुत बार गेंद कर दिया था, जिसका आसानी इस्तेमाल किया, जो रूम अवेलेबल था, कंट्रोल शॉट थी। इस तरह की गेंदें अगर आप यहाँ पे बार बार देते रहेंगे तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सज्जाद ने कीपिंग भी अच्छी की और अब बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इस सेंचुरी के करीब पहुंचते हुए। बड़ी स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी ऑल राउंड परफॉर्मेंस कहलाएगी इनकी। ग्लव वर्क भी इनका बहुत ही लाजवाब था। मलिक के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ऐसा लगता है, आज थोड़े बुझे बुझे लगे हैं। टॉस जीतने के अलावा कुछ भी सही नहीं हुआ आज सियालकोट के लिए। अपने बॉलर्स को आजमाना चाहते थे, यही टॉस पे इन्होंने मेंशन किया था, प्रेशर डालना चाह रहे थे और ये कहा था कि स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है इनकी टीम की, लेकिन ज़्यादा कारआमद साबित हो नहीं सकी। एग्जीक्यूशन में भी लैग किया, प्लानिंग में भी थोड़ा हमें नज़र आया कि बॉलर और कप्तान की एक पेज पे नज़र नहीं आए दोनों।
13वें ओवर के इख्तिताम पे 89 for 3। सियालकोट की बॉलिंग का आज आप कह सकते हैं उस तरह असल इम्तिहान नहीं होगा क्योंकि बोर्ड पे रन्स नहीं हैं इतने, लेकिन इस टूर्नामेंट में आज से पहले तक उनकी बॉलिंग सबसे कामयाब बॉलिंग थी इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड इकोनॉमी रेट। लेकिन इसमें सुपर 8 से पहले मरहले के मैचेस भी शामिल हैं, तो यहाँ सुपर 8 में थोड़ी सी डायनामिक्स डिफरेंट हो गई है। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया तो फील्डर देखते ही रह जाएंगे। अहमद ने अपनी आमद का ऐलान किया, उनका पहला छक्का। शानदार शॉट थी ये, इस एंगल से बहुत ही आसान था टारगेट करना, सीधा खेलने गए। ये इन्होंने एक अच्छी ऑप्शन अपनाई थी। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, फुल फॉलो थ्रू नजर आया। बिलाल आसिफ आपको इनविटेशन देंगे, जो उनका स्टाइल है कि वो बॉल को एयर देते हैं, हवा में छोड़ते हैं। आपके फुटवर्क का इम्तिहान होता है। अच्छी एक्सिक्यूशन थी इस मरतबा अहमद की जानिब से। पेस को भी वेरी करते हैं, थोड़ी फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी के साथ भी यहाँ गेंद करने पड़ेंगे। काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं अहमद। सजाद ने भी अच्छी बैटिंग की और कप्तान भी इनके यासिर शाह। और बोल्ड कर दिया, अच्छी वेरिएशन थी इस मरतबा बिलाल आसिफ की। थ्रू द एयर क्विकर डिलीवरी थी, लेकिन डिसेप्टिव थी। ऑफ द पिच जिप हुई और बैकफुट पर खेलना चाहते थे, मुकम्मल तौर पे बीट हो गए। बदला लिया यहाँ पे बिलाल आसिफ ने और चलता किया अहमद को। अहमद थोड़े से इंडिसाइसिव लगे, पहले फॉरवर्ड प्रेस जरूर किया था इन्होंने। यहाँ पे एक नजर, फिर डिलीवरी है यहाँ पे, यहाँ कोई मसला नहीं होगा, लेकिन पहले फॉरवर्ड प्रेस किया, उसके बाद कट करने का इरादा किया और बिल्कुल लाइन से दूर हो गए थे। ज्यादा रूम था भी नहीं अवेलेबल और लेट भी हो गए। फाइनली कामयाबी हासिल की, बिलाल ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की। अहमद खान 8 रन बना के पवेलियन वापस। 95 for 4। जानवे पे 4 और 80 पे 1 खिलाड़ी आउट था एबटाबाद का, तो 15 रन के अंदर अंदर 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। पूरे मैच में कोई लम्हा ऐसा आया नहीं जहां एबटाबाद पे प्रेशर आया हो। ये 3 विकेटें जल्दी गिरी हैं और एक आध विकेट मजीद जल्दी गिरती है तो तब प्रेशर फील करेंगे। हालांकि सिर्फ 25 रन बाकी बचे हैं, लेकिन समटाइम्स आप कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाते हैं और आप ऐसा अफोर्ड कर नहीं सकते बड़ी टीमों के खिलाफ। यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं एबटाबाद को, कि रन्स बहुत ज्यादा दरकार है नहीं। 4 विकेटें गिरी हैं, बैटिंग भी काफी अवेलेबल है, अभी कप्तान भी बैठे हैं। शुएब मलिक के पास ऑप्शन है, मोहम्मद अली का 1 ओवर बाकी बचा है, क्या वो उन्हें लाएंगे? यहाँ अगर वो डबल स्ट्राइक करते हैं तो सियालकोट की वापसी की कोई सूरत बन सकती है। यहाँ उनके ओवर को पीछे बचाने का कोई फायदा नहीं। और ये वो विकेट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था मरीना यहाँ पर। लेट भी हो गए थे, शॉट बहुत बाद में डिसाइड किया कि कट करने जाएंगे, तब तक गेंद गुजर चुका था। खुश नहीं थे बिलाल आसिफ भी विकेट लेके, क्योंकि जानते थे जिस तरह की बॉलिंग इनसे एक्सपेक्ट की जा रही है उस तरह शायद डिलीवर नहीं कर पाए। एबटाबाद की पहली विकेट की पार्टनरशिप अच्छी थी और दूसरी विकेट की भी।
लेकिन उसके बाद विकेटें मुसलसल गिरी और एक लम्हे पे लग रहा था शायद ये चेज बिल्कुल ही आसान होगी। मोहम्मद अली ने पहली विकेट हासिल की। क्या लाजवाब क्लासिकल डिसमिसल था। ये वो कामरान गुलाम की विकेट थी जिससे एक मिनी कोलैप्स शुरू हुआ। यहाँ बिलाल आसिफ की स्ट्रेटर वन और उसके बाद उनकी क्विकर वन। सुहेबुल्लाह नए बैटर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है सज्जाद को। बेगी पार्डन, सुहेबुल्लाह बॉलर थे, सज्जाद को ज्वाइन किया एतजाज ने बैटिंग क्रीज पर। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा डिलीवर करना पड़ेगा यहाँ पे अगर प्रेशर बिल्ड करने का सोच भी रहा है सियालकोट। सजाद बहुत ही वेल सेटल्ड हैं। सुहेब ने 2 ओवर्स में 21 रन दे रखे थे। इसके बावजूद शुएब मलिक ने इंतखाब किया कि वो उन्हीं से बॉल करवाएंगे। अली का 1 ओवर बचा है, कोई फायदा नहीं क्योंकि नए बैटर भी क्रीज पर थे। ये भी देखना होगा कि ओवर के आगाज पर सज्जाद ने एक सिंगल लिया और अब नए बैटर पर अली के थ्रू अटैक बेहतर कर सकते थे। कोई करीब में फील्डर भी नहीं है। हालांकि ये बात तो वाजे है कि सियालकोट को ये मैच जीतना है तो उन्हें विकेटें लेनी पड़ेंगी। डिफेंसिव फील्ड प्लेसमेंट जरूर है। शायद रन्स कंसीव नहीं करना चाह रहे, जो कि मुश्किल है। सरफेस अच्छी है, बैटर सेट हैं, ये अच्छी डिलीवरी थी। थोड़ा सा लेट हुआ इस बार भी शॉट अटेम्प्ट करने में और थोड़ा सा पीछे भी हट गए थे। अच्छी पेस से बॉल ज़रूर की, लेकिन बात सिर्फ यही है कि क्या ये विकेट टेकिंग डिलीवरीज हैं या नहीं। ये हर बॉल सोच के करनी पड़ेगी शोएब को। चांस शुएब मलिक पे आप चांस ले नहीं सकते। अच्छी कॉल थी सज्जाद की, उन्होंने मना किया एतजाज को जो कि रन लेना चाह रहे थे। ज्यादा टेंशन होनी तो नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 4.36, लेकिन अब स्टंप माइक से सुन रहे होंगे कि सियालकोट की टीम ने काफी हलचल मचाई हुई है मैदान में। एक दूसरे को बोल कर हौसला बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी दब सी गई है एबटाबाद की टीम, ऐसा लगता है। अच्छी फील्ड, इसी चीज की उम्मीद की जाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी सियालकोट को। डॉट बॉल्स अगर ये यहाँ पे लगातार 2-3 ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होगा क्योंकि अच्छा मोमेंटम चल रहा है एबटाबाद का अभी भी, लेकिन गेम को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह की एफर्ट्स दरकार हैं। कोई भी शुएब मलिक लेड टीम होगी तो आप ये तो तवक्को रखें कि वो आखिर तक फाइट करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। शुएब मलिक के कैरियर का खासा रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अच्छे रिजल्ट्स लेना भी उनका खासा रहा है। इसीलिए मैं पहले बात कर रहे थे कि अगर इवन 140 भी हो जाते तो यहाँ और मैच क्लोज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सज्जाद की दाद देनी होगी। वो एक ऐसा कूल और काम इन्फ्लुएंस है इस पूरी इनिंग्स पर कि इनिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी तरफ से। 15 के बाद 98 पे 4। कंपैरिजन है, ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। एबटाबाद के लिए आगे हैं और 1 विकेट पीछे भी हैं सियालकोट से। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सियालकोट को। बैटिंग लाजमी उनकी स्ट्रगल कर रही है आज। शुएब मलिक भी ज़्यादा स्टांस दे नहीं सके, हुरैरा ने भी स्ट्रगल किया। बिलाल आसिफ का आखिरी ओवर। अभी तक बहुत शानदार बॉलिंग की है। 15 रन दिए, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया और दोनों अच्छे क्लासिकल डिसमिसल्स थे। निकाल दिया इसे, अच्छी इम्प्रोवाइजेशन
सज्जाद ने इनिंग्स को थामे रखा है। 100 रन भी मुकम्मल हो गए एबटाबाद के। जो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसको रिलीज किया इस बाउंड्री से। काफी ब्रेव शॉट थी, प्रीमेडिटेटेड जरूर थी क्योंकि आउटसाइड लेग प्रोबेबली ये पिच हुई थी, लेकिन पहले से सोचा हुआ था, नजरें जमाए रखी और गैप हासिल करने में कामयाब हुए। अच्छी टाइमिंग, अच्छी शॉट। बड़ी कंपोज नॉक है ये सजाद की। हालांकि जब विकेटें गिरी तो ऐसा लगा कि शायद प्रेशर में आ जाएं, लेकिन उनका जो इस वक्त उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको काफी रीअश्योरिंग लगती है। फिर मिसफील्ड हुई। सुहेब बहुत प्रेशर में रहे हैं आज की शाम और कोई भी बॉल उनके हाथ में आया नहीं सीधे से। सुबह के मैच में हमने देखा था जमान खान कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हालात में थे। दो की कॉल है। एतजाज का पहला रन और अब मौका मिलेगा। अभी मौका नहीं मिलेगा सज्जाद को क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। गैप में से निकाल दिया। 3 फील्डर गेंद के पीछे हैं, लेकिन ये सब एफर्ट बेसूद जाएगी। अच्छा टाइम किया एतजाज ने खूबसूरती के साथ, ज्यादा जोर से हिट नहीं लगाई और 4 रन हासिल किए। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक था ये, सिर्फ टाइम किया, जोर की जरूरत भी नहीं पड़ी। जल्दी रीड की थी लेंथ, थोड़ा सा तेज गेंद था, फ्लैटर ट्रैजेक्टरी थी, लेकिन बैक फुट पे जाके प्लेसमेंट डाला, टाइमिंग उससे भी ज्यादा आला। रायगा गया ये वार भी बिलाल आसिफ का। उनका स्पेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। 16 के बाद एबटाबाद 107 पर 4। लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ क्रिकेट से भी और उसके साथ साथ जैसे जैसे सर्दियों की आमद है, चाय टपाल टी मोमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ से आप मैच के लम्हात भी देख सकते हैं, ये नज़ारे भी देख सकते हैं और साथ टपाल टी को भी इंजॉय कर सकते हैं। Just 1 run away now. Sajjad has played superbly with this chase. So to continue. You can see some movement in Sialkot. Obviously, they might not be winning this game, but you can sense something. You can also see Yasir Shah in the background, probably sending a message to Sajjad that he needs to carry his bat. Bob! He came out with intention, and he managed to grab all these runs with such a delight and elegance. Very impressive Sajjad there. He knows that if he gets out, the panic could set in. So he's playing a very responsible, a very measured knock, a calculated one. And it is important for him to carry his team through and just take them over the line. Only 12 runs more to get, and around 22 balls. So no pressure of the runs compared to the balls that are remaining. It's just that no more wickets falls. And I must say the wickets that have fallen have come due to poor shot selection. He's trying to slash it hard and pick up a single. Again, no sign of Muhammad Ali. Shoaib Malik has opted for Suhaib. Went for 25 in his 3.3 overs without a success. He's a happy guy, Yasir Shah. Very animated, always enjoying his cricket.
Aerial and gone. That's not what Sajjad would have wanted. Neither did Yasir Shah, but he has to walk now. After a brilliant lock of 50, he has to go. Well, this is now becoming a pattern where the batters, once they get to 50, they think that the job is done. Once more, the front foot check, which is absolutely fine. And this was short and wide, there to cut. But the execution wasn't ideal. And this one is a straightforward chance, which the fielder easily takes. And once again, that mindset where you start to think like a batter and you know that your team is dependent on you being there and finishing the job, it just seems non-existent with the new players coming in. All I see with them at the moment is, with not all of them, but actually some of them, once they've got to 50 or a reasonable score, they have got it for themselves, then it's like a careless stroke which brings their downfall. So this is somewhere these youngsters need to think that a match is not over unless it is over. And this is cricket and has to be taken seriously. Khalid Usman walks in. Yeah, Sajjad had a chance to carry his bat, finish the game for his team. Won't be in any worry. Khalid Usman, loads of experience for him. Finally, a wicket for Sohaib. He went for runs. You can see the strike rate. He can hit big. There's no doubt about it. That's good fielding. He's got a tight ring of fielders around that point, backward point area. And Sohaib is bowling with some pace. Got his wicket. There was no weight transfer. You can see he wanted to play the cut shot, but was in no position to play it. No weight transfer whatsoever. Well, it's just a careless swing of the bat. Just swinging it and hoping that the ball will go in the gap. This is not how you execute, and especially if you are on 50. You are well set. Once again, this one has been clipped off the hips in the gap. Will be a beautiful boundary courtesy Khalid Usman. So some pressure definitely taken off on this ball. Brings them 4 runs closer. 7 now remain. And 17 gone. 113 for 5. That's it for Sohaib. Again, just erring in the length. He's bowling with some pace, but if you're not accurate enough, you will suffer. And he did suffer on that occasion as well. It's a loosener for Khalid Usman. 113 for 5 after 17. Just 7 now needed. But 2 batters, Khalid and Etizaz. There'll be a lot of thinking to be done on Sialkot's behalf. They did opted for a different outcome out of the toss and tried and put pressure on the bowlers, Shoaib Malik. But the batters did not do their job. It wasn't much for the bowlers to defend. Just hurried through. The pace he is bowling at, it will hardly spin. And it is at times mind-boggling to see the batters not realizing that. It's not a single ball that he has spun tonight. And the way he bowls, flat trajectory, quick onto the bat. Just play the line. Somehow they managed to miss it. Oh, that's a freebie. Well, really well kept. So for Hamza, the flat trajectory was working and he decided to go even flatter. This time missing the target. And the keeper did a good job. Otherwise, the game could have finished on this ball.
Again, just cricket through the air. It's very dangerous to be lagging on the back foot against such a spinner. He launches it and will clear the boundary with ease. And with that, it's a win for Abbottabad. Done in style by Aetazaz. No worries whatsoever. He waited and finally took charge against Hamza. Yes, one in his zone, pitched up, and he took full advantage. An elegant swing of the bat and good connection. Made sure that the ball sailed over the fielder. This one again was a straighter one. Anyways, ball goes straight. I don't know why he needed to put that finger behind it. It goes straight anyway. So it was a good game, and Abbottabad have won it by 5 wickets, and a team that has won the most titles, Sialkot, opting to bat first after winning the toss, a decision which not many teams have taken over here at this venue, and with their own reasons, but has resulted in a loss. He's just exploring different avenues, probably. Shoaib Malik, he opted to put pressure on his bowlers, but the disappointment once again lies in his batting. Even he today could not really get going. Wasn't a big target, especially Abbottabad. They had some really good batters, some experienced ones, working around the young ones. And Aetazaz finishing it in style, winning by 5 wickets. They'll have to think a lot. Sialkot, obviously, a very experienced campaigner. Shoaib Malik will have to put the pieces together. Handshakes all around. Happy captain for Abbottabad, Yasir Shah. His spinners did well, and so did the batters. Good all-round support from his team. Yes, handshakes over there, and Abbottabad, congratulations to them, and they've done a fine job today, beating a side which is one of the contenders to lift the cup, so it's not an easy thing to do. And Yasir Shah and his men putting up an all-round show and gaining a very important couple of points for their team. They seem very satisfied as the moon looks beautiful. And now we have the Abbottabad batting card, and Sajjad's 50 was most valuable in this run chase, and he's got 18 only. Kamran, a handy 26 of 21. He was out to a poor stroke. A man of his talent can take it to the end. Afaq and Ahmed not able to make an impression, and Aetazaz, well, he got 12 and 6 to finish this game, and Khalid got that important boundary. So a decent batting card. Not much cushion provided for the bowlers. 2 for Bilal, Asif, an experienced campaigner, 1 each for Shoaib, Ali and Hamza. They did their best, but again, there wasn't much on board to work really hard for. Shoaib Malik calling it right. Actually managed to get a great start. Some poor bowling outside off stump really allowed them to a flyer of a start. Abbottabad never struggled. It was a good partnership, an opening partnership. Both the batters, they were really good, but this ball was a brilliant one by Muhammad Ali. And after that, it was all about scoring runs, some elegant shots, some brutal force offered off the back foot coming down the track. This was a very wild shot by Kamran Ghulam. You don't expect that from an experienced one. Some really good stumping, good glove work. But the runs kept flowing because there was no pressure whatsoever. Boundaries kept coming. Bilal Asif, he got his redemption. Some innovation to be seen, but this innings by Sajjad came to an end with this catch. He played a superb hand in this run chase. That was a strike to end it all and win it for Abbottabad by Aetazaz. A happy camp, a happy captain, and it's selfie time, and obviously they deserve it. Here's the match summary. Sialkot opted to bat first, posting 119. Tahir on 38, Hurera 15 and Hamza 15. Yasir got 3,
Spinners did a superb job. Adil with 2 and Muhammad Ali with 1. Abbottabad in reply, a superb 50 by Sajjad. Kamran Ghulam on 26 and Anis on 18. Bowlers, Bilal Asif obviously is always in the lineup with 2 wickets. Hamza and Ali with 1 each. And finally Abbottabad won by 5 wickets. There are the standings now. Sialkot and Abbottabad. Peshawar obviously leading and they're unbeatable. Rawalpindi in the second position. Sialkot has won the first match of the Super 8. Abbottabad with 1 match as well. But you need to keep an eye on that net run rate. The points are equal for them. Abbottabad will be happy to climb up a spot. We'll take a break and after that we'll join you for the presentation. Welcome to the presentation ceremony of AH Group presents Jazz National T20 Cup. It's a match between Sialkot and Abbottabad, which Abbottabad won quite comprehensively by 5 wickets. Before I move on to the presentation party, I've got alongside me Mr. Chaudhry Saad Manzoor, Senior Manager, High Performance Cricket Centre Karachi, Mr. Mohammad Arsalan, Manager, Social Media, PCB. First, I would request Mr. Mohammad Arsalan, he will present the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of PKR 25,000 to Sajjad Ali for his 50 runs of 45 deliveries with 8 boundaries. Right, moving on, I would request Mr. Chaudhry Saad Manzoor will present the Jazz Player of the Match Trophy and Cash Award of PKR 25,000 to Yasir Shah. 4 overs, 12 runs and 3 wickets. Brilliant performance by Yasir, led from the front. शाह जी आपसे बात करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस रही, आपसे टीम के बारे में भी बात पहले ही कर लेते हैं क्योंकि बाद में भी आप ही ने आना है, तो कैसे रही, कैसे आप फील कर रहे हैं आप इस परफॉर्मेंस के बाद? ज़बरदस्त रहा क्योंकि हम टॉस तो हार गए थे लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम टॉस जीतेंगे तो हम पहले बॉलिंग ही करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा लेकिन उस तरह नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं था, ड्यू इस तरह ज़्यादा नहीं था। तो ये हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, हमारे स्पिनर्स ने और फास्ट बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है क्योंकि हमारी ये बॉलर्स यंगस्टर है तो इसी वजह से जो हमारे नए फास्ट बॉलर आए हुए हैं तो वो इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, इसी वजह से हमने बॉलिंग पहले की।
एब्सोल्युटली, आप काफ़ी खुश थे टॉस के ऊपर, आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि क्यों आप पहले जब शोएब मलिक ने टॉस जीत के बैटिंग की तो आपको आपकी खुशी दीदनी थी। ये कि मैं कोशिश ये थी कि मैं टॉस जीत के मैंने पहले बॉलिंग ही करनी है और वही उन लोगों ने टॉस जीता है और हमें पहले बॉलिंग ही कराई है। अपनी बॉलिंग के बारे में बताइए, अच्छा रिदम बना हुआ, अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है। बॉलिंग ज़बरदस्त हो रही है, कोशिश कर रहा हूँ एक जगह पे बॉल करें क्योंकि T20 में आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि कभी आप गुगली भी करते हो, सीधा बॉल भी करते हो, लेग स्पिन भी करते हो, तो आपको वेरिएशन के साथ बॉल करने पड़े। सियालकोट बड़ी साइड है, इनको हराने के बाद यंग एबटाबाद को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारा फ़खर जमान बीमार था और हमारे एक और फास्ट बॉलर था, इनका भी साइड स्ट्रेन आया हुआ था तो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अच्छा हमारा बूस्टअप मिल गया हमारे प्लेयर्स के लिए और बड़ा कॉन्फिडेंस आया। All the best, Yasir Shah, for the remaining games. थैंक यू सर। Right, now time to talk to the losing captain. May I request Mr. Shoaib Malik to have a word with us. Shoaib, it's just not working. 2 tosses you won, batted first, maybe time to change the strategy? I think so, but I guess you still have to see your strengths, and I guess our strength is our bowling. They have been performing, and the games which we played in other venues, and our bowlers did really well. We have restricted oppositions, and I guess, yeah, time has come to change our tactics. Yeah, not only the tactics, but do you need to have a word with the batters also? Maybe look into the batting order or the batting strength, maybe add another batter in? Well, I guess if you look at our squad, we have a lot of youngsters in our team, and I guess providing them a lot of information, I don't think I should be doing that because less information so they can play on their potential. And this is why I'm not someone who wants to give a lot of information. But I guess the time has come to raise their game, and I guess bit of key to them, which we call it chabi dene ki zarorat hai. Absolutely, it is important. Abbottabad se match aa rahe hain, a big defeat hai. Are you hurt? Not really. Of course, it's a long tournament. So far, we played 2 games, won 1, lost 1, and I guess tomorrow there's another opportunity, and we're looking forward for the opportunity. But we have quite a few injuries as well in our squad, and we need to look at our injuries, and whatever backup we have, we're going to utilize that. All the best for the coming games, Shoaib. Thank you. Right, that is all we have from down there. Back to Marina Iqbal.
Hello and welcome to the post show, looking at the match summary of this game of the AH Group presents Jazz Super 4G. T20 Cup, Sialkot won the toss, decided to bat first, posted only 119. Tahir top scored with 38. Yasir Shah, 4 overs, 3 for 12, leading bowler. And then Abbottabad, wouldn't say walk in the park, but they managed to cross the line in the 18th over with 120 for 5. Sajjad getting a 50, Abbottabad scoring 2 points with 5 wickets margin. Lots to talk about, more to focus on Sialkot. What went wrong once again on this ground? They've done well outside the National Bank Cricket Stadium, but when they come here, starting off with the decision of Captain Shoaib Malik once again to bat first, saying that he wants to test his bowlers. Yes, they did get tested. Salman Bhatt alongside me will do a quick recap and a post-mortem of this show. Salman, jab baat karte hain, we look at Shoaib Malik's decision. Just let's revisit. We'd also talked about it in the commentary upstairs. Did he, according to you, have got what he wanted out of this game? The bowlers did get tested. Well, I wonder what he wanted out of this game, because ये Super 8 का start है, and they've played one game. This was their second game. How can you think about testing one department of your team when you are in the Super 8 in the second game? You have to win a few games, confirm your place in the top 4, and then you can do things like experimenting on a certain aspect of the game. आप किस तरह का ये decision है? And it's just simple as that. They just keep losing wickets. There were no real partnerships, no good shot selection भी एतराज़ वाली है, उस पर भी कोई ख़ास नहीं थी चीज़. लेकिन ये जो बात है ना, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही तो कि आप बॉलिंग को टेस्ट कर रहे हैं. तो फिर क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये डिसीजन था तो आपने रन कम बनाए? अगर यहाँ पे चेज करके जीत रही हैं टीमें, तो फिर या तो आप 150-60 करते और फिर कहते कि इतना क्वेश्चन है बॉलर्स को दिया है कि आप उनको फिर एक्सपेरिमेंट. Because obviously skipper Shoaib Malik understands the game a lot. उनसे ज़्यादा experience किसी का नहीं है. I would love to know, for my knowledge, कि what is the reason behind testing a bowling lineup in the second game of the Super 8? क्योंकि this is something beyond me. So I cannot comment more. But okay. I would love to know कि इस वक्त बॉलरों से क्या मालूम करना था. ठीक है. बात करते हैं हुरैरा की. हमने कुछ डिस्क्राइब किया था, एक शॉट ऐसा जिस पे वो आउट हुए और कई बार बोल्ड भी हुए हैं हुरैरा. सलमान ने पॉइंट आउट किया था कि उनके कोच हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है. देखते हैं उसकी डिसमिसल को एक बार फिर. सलमान विल आस्क यू टू रन दैट अगेन. विल वॉच इट होपफुली इन द देखिए जो इनकी फ्रंट लेग है हुरैरा की, यहाँ रीप्ले है, तो आप उसका टो देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है टुवर्ड्स द एम्पायर. वंस ही टेक्स अ पोजीशन, जैसे ही बॉल रिलीज हुआ है और आफ्टर पिचिंग, लुक एट द पोजीशन स्ट्रेट टुवर्ड्स द एम्पायर. यू कैन थ्री स्टंप्स आपको नजर आ रही हैं इसमें. तो फॉर एन ओपनिंग बैट्समैन टू गेट बोल्ड एज मेनी टाइम्स इन वन सीजन, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. वो करियर में आप कुछ बार बोल्ड होते हैं, ये आप एक सीजन में. यार इसका रीज़न ये है कि आपकी जो टांग है वो ऑफ स्टंप की तरफ जा नहीं रही, not moving towards the ball, and that is exactly what Tanveer Shaukat, his head coach from Faisalabad, pointed out. So I don't know what he is thinking, but definitely whatever he said, we have seen it on our screens. So it's a good thing that he is still very young. इस एज में अगर वो ये करेक्ट कर लें जिस टेक्निकल एस्पेक्ट की आप बात करें, बिकॉज अगर आप अपने मिड 30s में हो और एज अ बैट्समैन हो तो फिर वो एक हैबिट बन जाता है. देखिए ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट. इसने 1000 रन्स किए हैं 2 सीजन्स में. ये कोई छोटी बात नहीं है टू कम आउट फ्रॉम द अंडर 19s एंड achieve 1000 runs in 2 seasons consecutively. He must have some great things about himself. But yes, there is something which needs to be worked upon. और as players आपकी लाइफ में अक्सर चीज़ें आती हैं where you know you stop doing something which was right and you adapt to something new. फिर उसमें ट्रांजिशन में थोड़ा मिस्टेक्स भी होते हैं. So maybe he is going through that phase, but I think he needs to get over that quickly. अच्छा, कुछ और जायजा लें अगर इनकी बैटिंग का, तो हमने देखा कि पावर प्ले अच्छा था, 46, 44 और समथिंग लाइक दैट. जब हुरैरा आउट हुए तो ताहिर से उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन ताहिर की जो इंजरी हुई है, आई थिंक वो एक किसी फ्रैक्शन सेटबैक हो गया इनकी टीम को, जिसकी वजह से ये आउट हो गए. इनकी इंजरी पहले हुई थी इस डिसमिसल से, जहाँ पे अब दूसरा रन लेने के लिए पलटे थे और इनका नी ट्विस्ट हुआ था. उसके बाद ही वॉज हाफ नॉट फुली फिट. और जब ये शॉट ये खेलने गए हैं, अभी अगर हम हो सके फिर से दिखाएं, बैक फुट पे गए थे. आई थिंक इनका पूरा वेट बॉडी का उसी नी पर आ गया जिसमें इनकी तकलीफ थी. Yes, I think this is the place where he got stuck. Spike शायद फंसे पिच में, and then the whole body rotated, the upper body rotated, and maybe that had a great impact on the knee. और इससे पहले भी ऐसा हुआ होगा, ये देखिए. So definitely he looked in great pain, and I really hope कि जल्दी recover करे. हमारे पास इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये अवेलेबल है अगले मैच के लिए. That's a very fast recovery, but that's a good thing to know. Okay, so
If we just look at this particular match, Abbottabad की भी थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं. Abbottabad ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, सिर्फ गलत शॉट्स ही नहीं कहेंगे. I think खालिद उस्मान हो, यासिर शाह हो, स्पिनर्स ने बड़ा टाइट लाइंस की हैं. देखिए क्रेडिट तो देना पड़ेगा, सियालकोट कोई छोटी साइड नहीं है. ये सबसे ज़्यादा नेशनल T20 जीते हैं, सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस कैप्टन इनके हैं, और कह लीजिए कि सबसे मंजे हुए T20 क्रिकेटर अगर पाकिस्तान में हैं तो ही इज़ राइट अप देयर शोएब मलिक. तो उनकी प्रेजेंस में बिलाल आसिफ, देन ताहिर बेग इज़ अ गुड यंगस्टर, इन सब के प्रेजेंस में मैच जीतना कोई आसान काम नहीं था. सो येस, अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द एबटाबाद टीम, दे हैव डन ब्रिलियंटली. चलिए, कल का दिन भी बड़ा अहम है. 2 बड़े मैचेस यहाँ पर हैं और काफ़ी फैसले होंगे, और आपको दिखाते हैं कि कौन से 2 मैचेस लाइंड अप है. और सलमान, पेशावर ग्रेट गन्स, लाहौर भी कितना चैलेंज कर पाएगा इनको. और फिर अगला मैच काफ़ी बड़ा है, लाहौर वाइट और कराची वाइट्स. वेल, लाहौर नीड टू विन द गेम. आप देखिए लाहौर की परफॉर्मेंस है, आज वो जीते ज़रूर हैं बाहर, बट व्हेनेवर दे हैव प्लेड हियर दे हैव रिलाइड ऑन अहमद शहजाद टू डू द बल्क ऑफ स्कोरिंग, and from the other end उसको support चाहिए. Unless that is there, it is hard to win competition with one player. You have to respond from the other end. All right. Well, thank you so much for joining us. We'll catch you tomorrow and hope you've enjoyed our coverage for the day. We'll come back to you with a lot of cricket with Peshawar, Karachi, Lahore, all in action here at the National Bank Stadium. Until then, it's good night. One slip in place. Cut away, bad ball, too much weight. Another boundary. Got that edge. Now that's what Muhammad Ali can do. In a loss. There he's guided. He's going to take some catching. It's gone. Kind of disappeared. This one has gone with the arm. मौका अच्छा इस्तेमाल किया और बोल्ड कर दिया. Launches it. It's a win for Abbottabad.